Good evening, sir. Hi, good evening all, good evening Habibul. Hope you all are doing well. Yes. Am I audible? Yes. Okay, great. So let me share my screen, then we'll start our session. So is it my screen is visible? Yes, sir. Your voice is very low, Habibul. Hello. Anyone able to hear me? Sir, am I audible? Yeah. Yes, sir. Better. Okay, great. So before starting our discussion, I would like to just understand, like last class we have just discussion about the stateful, stateless firewall, some basic idea of the proxy and firewall, and some idea about a single pass software with a parallel processing hardware, how basically Palo Alto having this feature. So anyone having any question on it? They want to discuss more about it, or everyone is clear about this? What happened? Sir, I have a little doubt for the yesterday. Okay, hello. Am I audible to you, sir? Yeah, please. So yesterday you have discussed about the stateless and stateful firewalls. So can you please explain with some from examples so that we can elaborate? We can clear that point. So okay, so like suppose I mentioned that in our PPT. Also, if you see that stateless, जहाँ पे हम basically check ACL करते हैं, right? हमारे पास predefined ACL होती है, like based on the source IP address, destination IP address, or what else? Ports and protocols. Okay, so उसके basis पे हम सारी चीजें allow या deny करते हैं on firewalls. Okay, so basically once मेरा जब packet firewall पे enter करता है तो it's check that the whatever the ACL configured on this firewall or routers, like you just think about the router. So पहले वो क्या करेगा, हर packet आएगा तो before processing they will check the ACL parameter. Do you have anything configured for the ACL for this source and destination? So once it is checked that source and destination, any port information available like port 80, port 40, 22, whatever the port we having any port, kind of the custom port as well. So that all they will check. अगर वो उसको मिलता है तो permit करेगा या deny करेगा. That is the stateless. तब उस पैकेट को आगे प्रोसेस करेगा. लेकिन stateful में क्या होता है कि हमारा फायरवॉल में एक कनेक्शन टेबल बन जाता है, राइट? जो हमारा एक स्टेट हो जाता है, लाइक स्टेट क्रिएट होता है, जो सेशन जिसको बोलते हैं हम देखेंगे कि फायरवॉल कैसे बनता है. I'll demonstrate you. उस सेशन फर्स्ट टाइम तो चलो वो सारी चीज चेक करता है कि भाई हमारे पास पॉलिसी है कि नहीं है, पर्टिकुलर सोर्स डेस्टिनेशन के लिए नेट है कि नहीं है, राउटिंग है कि नहीं है. अगर वो सब कुछ उसको मिल जाता है, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेता है तो एक सेशन बना लेता है. तो जब भी दोबारा पैकेट आता है तो वो उसको फिर से रीचेक नहीं करता है, वो फटाफट प्रोसेस कर देता है. जबकि स्टेटफुल फायरवॉल में, स्टेटलेस फायरवॉल में हर बार हर पैकेट के लिए चेक करता है. तो ऐसे इज द लाइक वन ऑफ द ग्रेट फायरवॉल इज एग्जांपल ऑफ द स्टेटलेस फायरवॉल, जहाँ पे हम सब कुछ बेस्ड ऑन द ACL और लाइक सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल नंबर के हिसाब से हम सब कुछ करते हैं. दैट्स व्हाई द ASA is the stateless firewall we called. Another firewall like Checkpoint and now it is FortiGate and this Palo Alto, they all are the stateful firewall. So this is something we can think about the stateful and stateless. Hope is it clear, or shall you want to understand more about this? Sir, ACL में like in stateless में like source destination port number all these things होती है. उसके बाद like in stateful में अगर मान के चलिए source and destination they had captured and create a session.
So what about Hmm. the next step if they will get the port number in next packet? So that will compare to the session ID. So port number तो we didn't define on the previous session. So वो उसको ignore कर देगा, then we that नहीं, जब हमारा सेशन बनता है, जब भी सेशन बनाता है कोई भी, तो सेशन में हमारा सारे डिटेल होते हैं. विल सी दैट इवन एप्लीकेशन डिटेल भी होता है, पोर्ट डिटेल भी होता है, सब कुछ होता है. मैं अभी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा आगे क्लास बढ़ाते हैं तो विल सी दैट हाउ द सेशन विल क्रिएटेड एंड व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन दे हैव. फायरवॉल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट. तो जब स्टेटफुल जब कनेक्शन आप देखोगे ना, आप खुद रिकॉग्नाइज कर लोगे कि क्या क्या है हमारे स्टेटफुल कनेक्शंस में. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा. ठीक है, फिर नहीं भी समझ आता फिर दोबारा पूछना, दोबारा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. ओके sure sir. सर आज प्रैक्टिकल करवाएंगे आप? प्रैक्टिकल ही से ही स्टार्ट कर लेते हैं फिर. ठीक है सर. क्या आई वाज थिंकिंग टू स्टार्ट विद सम थ्योरेटिकल पार्ट, बट चलो प्रैक्टिकल ही पहले स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स सी. ओके, सो चलो आज सीखते हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कॉन्फ़िगर द ब्रांड न्यू फायरवॉल्स. ठीक है सर, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्ट यू. एक्चुअली अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन करे व्हाट इज द डिफरेंस स्टेटफुल और स्टेटलेस, क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा ब्रीफली? ब्रीफली देखो, सिंपल सा आंसर है स्टेटफुल एंड स्टेटलेस. सो one liner answer, like in a stateless firewall always have to check each and every packet whatever the packet हमारे firewall में आ रहा है, उसके लिए हर बार वो पैकेट के लिए वो चेक करेगा सोर्स बेस्ड ऑन द सोर्स डेस्टिनेशन एंड पोर्ट नंबर की उसके पास कोई ACL है कि नहीं है, कोई प्री डिफाइंड कोई रूल है कि नहीं है, राइट. उसको अलाउ करना है, डिनाई करना है, राइट. दैट इज अ स्टेटलेस. लाइक हर उसके पास कोई स्टेट नहीं है. स्टेटलेस मींस मतलब कि जस्ट थिंक कि मेरे पास प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई स्टेट नहीं है, कनेक्शन का फ्लो पैरामीटर नहीं है, मेरे को ये नहीं पता है कि मुझे किधर जाना है. जैसे आपको सपोज करो कि आपने घर से ड्राइव स्टार्ट किया, ठीक है, और आपको लेट्स से सपोज आपको न्यू दिल्ली जाना है और आप मतलब आपको किसी सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, लेट्स थिंक इन दिस वे, और आपको रास्ता नहीं पता है, ठीक है. तो आपने क्या किया, जीपीएस लगाया और जीपीएस ने बता दिया कि ठीक है आपको पूरा पाथ फॉलो करना है, राइट. और आपको उस पाथ को पकड़ के सीधे आप डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे, राइट. तो आपको पूरा स्टेट पता है कि कौन कौन से रास्ता हमको जाना है, क्या क्या फॉलो करना है, कहाँ पे रेड लाइट मिलेगा, कहाँ पे जाम मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा. आपको पूरा रास्ते का स्टेट पता है कि मेरा क्या कनेक्शन होगा, कैसे होगा, सब कुछ आपको विजिबिलिटी है. बट सपोज करो कि आपके पास जीपीएस नहीं है और आपको किसी सिटी में जाना है, तो क्या करोगे. आप थोड़ा दूर जाओगे, पहला चौक मिलेगा, वहां पूछोगे हे आई हैव टू गो न्यू दिल्ली. सपोज अगर आप नोएडा में हो या गुड़गांव में हो, तो पहला जो आपको चौक मिलेगा, आप पूछोगे, आपको नहीं पता है कहाँ जाना है, कि आपको जाना है आपको न्यू दिल्ली. तो आप या तो आपको कुछ लिखा होगा उसको देखोगे, उसको मैच करोगे, अच्छा ठीक है नई दिल्ली के लिए ये बोर्ड फॉलो कर रहा है, यहाँ पे साइन बनाओ तो इसको लेकर मैं जाऊंगा. पहले चेक करोगे, रुकोगे, चेक करोगे, फिर आगे बढ़ोगे आप. कहने का मतलब है तो दैट इज स्टेटलेस. मतलब कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है पहले सब कुछ पूरा पाथ का. तो ये एक आपका सिंपल सा डेफिनेशन होना चाहिए स्टेटलेस. दैट मींस कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है. आपको हर पैकेट, जब भी आप जाओगे, हर पैकेट के लिए आपको चेक करना है इंडिविजुअली कि मेरे पास परमिट है या नहीं परमिट है, डिनाई है या परमिट है, बेस्ड ऑन द two parameters like source destination, like L3 parameter and L4 parameters. जबकि स्टेटफुल से बात करें तो उसमें सब कुछ आपका L3 आता है, L4 आता है, L7 भी आता है, सब कुछ उसमें आ जाता है. तो उसका एक कनेक्शन प्री बिल्ट रहता है, आपके फायरवॉल के अंदर प्री बिल्ट कनेक्शन रहता है. जैसे पैकेट आता है उसको एकदम से दिखता है, अच्छा इसको जाना है यहाँ पे, ठीक है, इसके मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन, मैं इसको तुरंत प्रोसेस करता हूँ. वो कुछ नहीं चेक करेगा, वो नहीं जाएगा पॉलिसी वेरीफाई करने, वो नहीं जाएगा नेट वेरीफाई करने, वो कुछ नहीं चेक करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसको कनेक्शन है. तो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर पहले जब हम पैकेट पढ़ेंगे ना इसके दिस पैकेट कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, तो हमें इस चीज समझ में आ जाएगी कि क्या होता है हमारा, कैसे ये बनाता है सब कुछ. ठीक है. Pankaj, sorry to interrupt you. If you could go with the modules like the SP3 and flow logic, if you could explain it today, we can. We can do the practical later, right?
Okay, so let me do one thing. That was also my idea, but if you guys insisting to do the practical, that is always be in our session, because practical तो हमें करना ही है. तो इसके बाद हमारा सारा कुछ प्रैक्टिकल ही है. जो भी हम करेंगे मॉड्यूल 1 के बाद, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल. ठीक है, सारे मॉड्यूल में कुछ भी ऐसा बिना प्रैक्टिकल का नहीं है. सो दिस इज ओनली थियोरेटिकल सेशन वेयर वी हैव टू पुट आवर टाइम टू अंडरस्टैंड द पैकेट फ्लो एंड आर्किटेक्चर एंड ऑल, राइट? So let me first I'll try to explain in next 1 hour about this flow logic. अगर टाइम बचता है तो एक छोटा सा डेमो करेंगे about lab, कैसे हम फायरवॉल, नया फायरवॉल कैसे, ब्रांड न्यू फायरवॉल कैसे लगाते हैं, राइट? कैसे उसे कॉन्फ़िगर करते हैं. So let me go in this direction. So yesterday we'll discuss about that the SP3 architecture, where we covered that how with the help of the single pass software and with the parallel processing, how the packet quickly can be processed with the firewall with the help of different hardwares, and different CPU for the management, the data planes, and that packet will be processed to egress interface. So that things we understand, and today we'll try to understand further like about the how the basically packet can be treated once it reaches to the firewall. So let's say, let me just maximize this. So let's say suppose कि ये मेरी firewall है, ठीक है? इसका एक हमारा ingress interface हुआ, एक मेरा इसका egress interface हुआ. ओके, सो इंग्रेस मीन्स मेरा पैकेट, एक हमारा somehow एक पैकेट है जो इस तरह से चल के इसके पास आ रहा है. इसके अंदर बहुत सारे डेटा हैं, तो ये पैकेट इन हो रहा है, और ये सेम पैकेट हमारा इधर से आउट हो रहा है जिसके अंदर भी डाटा है. दैट इज इग्रेस. सो इंग्रेस मीन्स पैकेट इज एंटरिंग टू द फायरवॉल, इग्रेस मीन्स पैकेट इज गोइंग आउट फ्रॉम द फायरवॉल. इट्स इन, इट्स आउट. इज इट क्लियर गाइस? सो दिस इज द इंग्रेस एंड इग्रेस. So I use the term ingress. So आप समझना कि मेरा पैकेट इंटर हो रहा है फायरवॉल के अंदर. अगर मैं इग्रेस टर्म यूज करूं तो आप समझना कि मेरा पैकेट फायरवॉल से बाहर जा रहा है. तो क्या होता है बेसिकली जब मेरा पैकेट किसी फायरवॉल को इंटर करता है? तो यहाँ देखो, सबसे पहला हमारा स्टेट आता है इनग्रेस. सो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो इनग्रेस सेक्शन में क्या होता है, पैकेट सबसे पहले रिसीव होता है फायरवॉल के अंदर. ओके, लेट मी नो गाइस कि हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, कि बोथ में करना है. जैसे आप बताओगे वैसा मैं कोशिश करूंगा करने के लिए. सर बोथ 50-50 सर. ओके, 50-50. ओके, ठीक है. सो नाउ वी कैन सी दैट समटाइम आल्सो नॉट अंडरस्टैंड लाइक क्या मॉडल फॉलो करना चाहिए, बट ठीक है, चलो आई विल ट्राई टू बोथ वे. ओके, सो यू कैन सी दैट हियर पैकेट इज एंटरिंग टू दिस फायर, हिटिंग टू द फायरवॉल. फायरवॉल को हिट करने के बाद that what this firewall is doing with this packet. Firewall के इंटरफेस पे सपोज करो कि इंटरफेस का कुछ नाम यहाँ पे दिया. I suppose given a name like maybe Ethernet 0x0. This is the ingress interface, and this could be might be Ethernet 0x1. So let's assume कि पैकेट आपका Ethernet 0x0 पे हिट किया यहाँ पे, ठीक है, फायरवॉल पे. तो सबसे पहले it will extract the information L2. What is L2? That is a MAC address, right? What is L3? That is IP address. And what is the L4? That is the port number. Make sense, guys? So it will extract the information about the L2, L3, L4 information. Then what it will do? So once packet will land to this firewall, it will extract information L2, L3, and L4. Ingress interface, zone lookup, IP fragmentation assembly if applicable. So basically, in this state, firewall will not do much things. It will just check what is my ingress interface name and what is the zone associated with that particular interface. And after that, it will just extract the L2, L3, and L4 information. So just it is extracting and gathering the data. Nothing it is doing anything. So once it is done, then there could be two chances with this packet. Still packet in the ingress state. Might be with that packet with some error.
packet is not valid. Okay. Whatever the packet I have received, that is not valid packet, might be invalid packet. Invalid could be many reason. Like if you guys know the L2 and L3 headers, let me show you quickly. So probably I have information of that header information. Okay, so you can see that in this header we having a CRC, cyclic redundancy check. And if we having some error in the packet during the cyclic, every packet for the L2 and L3, they having a CRC field. You can see the checksum, header checksum. It's also like one kind of checksum of this packet. So you can see that here is also L3 checksum. And if you go in the L4, there might be also having some checksum. See that? So every packets, like whatever the packets is coming and inside of this information, they all packet do the checksum and like errors and all, like they make sure the packet is valid. But in some case, if the packet is not valid here, okay, and it having some error, it is not going to process for the next step. It will simply discard this packet. So this is the first step the firewall is going to do. Once packet enter to the firewall, it will try to extract the L2, L3, L4 information and try to see what is the interface and zone lookup it will try to do. And then after gathering this all information, if it found packet is invalid and it's having a not valid checksum, not valid CRC for the L2 or L3 and L4, then it will simply discard that packet. It will not going to process for the next step. Sir, what is the criteria of calculating this CRC value? Right? How we can say that this packet is not valid CRC, checksum error is over there or not? So see in header itself, like suppose if you are like suppose sending some data, okay, and you just written in data in my name is Pankaj, okay, so you can read this data, right? Suppose this is the data you just try to send somewhere, but once this and according to this data, cyclic redundancy check and checksum all be done, and that is like clear. This should be data and pattern should be matched as per the header and as per the program of the like whatever written in the iOS format. Okay, this is the data. But somehow if the packet and this data come to the firewall and it found whatever the segment available here is name, age, my, or might be Pankaj is the first. So you can see that this is not a proper format data. It is like the what actually iOS want to understand in based on the L2 header, or firewall want to understand, interface want to understand. This is not in sequence what they actually wanted to have. So it's found there is some fishy. It's not a good things. This packet does not looks valid. Originally client send this data, but somehow in between data coming to the interface, someone is doing some malfunctional data, or someone has inserted some kind of the malicious traffic in the data. So, or might be any reason the data has been changed in between. So data integrity has been lost. So there is a like in security, there is a confidentiality integrity. So that data integrity, if we talk data integrity, that means that they having to maintain the integrity. Whatever I'm sending, that should be received the same as a receiver. If somehow the integrity has been compromised, or that has been, hacked by someone and they manipulated the data, that is a danger thing. So how basically that can be done? So that is the CRC and checksum help to, validate that the stuffs. So let's say once the packet hits, my name is Pankaj with that should be the predefined data pattern for the, checking of the CRC and checksum, but it's fine. The Pankaj name is my, and so there is some fishy, and then simply it will going to discard the packet. So this is how it is just change of the sequence. How could it be calculation? If we go for a formula of CRC, how could we provide an impact over it? So see, if you go in the calculation CRC and checksum, that is again like another topic for the calculation. You have to no, that's right. But what is basically the function of CRC? I mean, what is the mechanism? Why we calculate it and how we calculate it? I mean, what impact does it make on a packet? I am getting your point that integrity has been lost.
Right, but exactly what the CRC is doing. So that's what I'm trying to say, like CRC checksum. These are the parameters included in the L2 frame headers, right? You understand my point? And checksum and CRC both are like that, they have to maintain the data integrity, right? So they're having a mechanism inbuilt in this IOS feature itself. So if packet is coming in the Cisco packet, Cisco router switch, or whatever the network devices, L2 header, L3 headers, they're having or L4 headers, they always go and check that the checksum values, okay? So that already inbuilt in the iOS function feature, and they're having a that much capability that they can read that the codes, whatever the format data is coming in the binary format, because you can see data always go in the binary form, right? It's not like so they're having a predefined some criteria like how the binary code is going to be switched to one interface to another interface in terms of the data integrity, okay? So if that is not matching the integrity, definitely there is something fishy, okay? So that checksum and CRC, they think, yeah, there is something. See, I have not done anything fishy with the, just giving you an example. I have not done anything fishy with that data, right? I'm changing in frame format size, right? I'm increasing an MTU. Does it make any impact on CRC calculation? Sorry? Well, if I change the fragment size, right, or an offset value over there, or any factor over there, does it create a change in CRC value of that packet? So say, if you're talking about the MTU, right? MTU, like, right, I'm just giving you an example. I'm just quoting an example, an offset value, MTU value, or any other value. If I change, whether it would put any impact on the CRC. No, if you talk about the MTU, I am sure that MTU is just nothing to do with this, CRC. And like before, like anything less than the interface MTU, that is 1500, that is predefined for the inbuilt of the any of the hardware interface. If it is going beyond the 1500, it is going to do the fragmentation automatically to accept the packet. Okay, that's one thing. But if you just sending the jumbo MTU, like more than 9,000, I'm making runt or I'm making giant, right? Yeah. So that in that case, the packet will be accepted without any fragmentations. Okay, but the fragmentations is something like if your fragmentation is happening here and your network is not accepting that data because of the higher MTU size, so there would be high chance the communication is not going to happen. You have to tweak your MTU size. Okay, so that is the one thing you just have to take care during your live troubleshooting. That is a case of a MTU, but my point is, my question is, like, if we change these values, will it impact on CRC? And how do I find that this packet, just by looking in a frame format, right? We are doing an inspection and we are checking the frame format of L2, L3, L4 layer. Over there, how can I find that this packet has been, is being infected by anything? By checking the CRC value, what difference value I will note over there? So is there any difference in the value? If you want to understand this topic, I can separately tell to you. If you want to understand definitely this CRC and checks, because we have to go through all the process with the L2, L3 headers. Then definitely we'll understand. But here for the Palo Alto, we have to understand like which condition the packet can be discarded. That is a more important thing. Here we have to understand. Okay. So if you think like you want to just understand how CRC calculation is going to happen, how checksum is going to happen, that actually, in the previous slide you have shown when you are when you shown the frame format of TCP IPN over there. Right, at that moment you were discussing about that checksum value. That's why I'm asking because I just showed you just for the reference. Because everywhere, this happens that everywhere we will just see the checksum value and we will tell when there is an error, there is a CRC calculation is over there. Apart from it, nobody is going beyond that. That what is the error, how we will identify it, so where we this can. If you are going to the CCNA and CCNP, definitely you are going to understand each and everything. Okay. But if you're going for discussion about the Palo Alto or some firewall, nobody is going to tell about the CRC and MAC frame, because if you're going to tell and calculation all the stuff, that is again a different story. No, anyway, leave it. Yeah. So hope you understand my concern also. I know that you having a good background about this CCNA and CCNP. No, that's okay. That's okay. I have a doubt. That's why I am discussing it. No, so let me tell you. Because it is a fact that nobody is aware of each and everything, right? So let me cut in short that if you really want to understand, see if you go in the Cisco documentation, this CRC and L2 frame, it's having a big topic itself. Okay. Right. I will check. No issues.
I will say. So yeah, so that is one thing, guys. Okay, no worry. I'll try it someday in buffer time to explain this. It would be great. It would be great. Yeah, Sir. yeah. Okay, definitely, no worry. I'll try to explain this. And even if any of the candidate will get anything valuable, he could add over there. That would be yeah. A great. If anyone also want to add, that is a great, no issue for me. Okay. So there is a chance like the packet can be discarded based on this error and whatever kind like invalid packet. So that is the one step. So where the packet can be discarded, it is not going to process for the next step. If everything is fine and packet is passed to the next step, like the firewall inspection applicable and all, then there could be two possibility of this, like what is going to happen with the packet. That is two possibility. One is that that could be either, if you see that, if the firewall inspection applicable, if this is not applicable for firewall inspection, it is directly going to the egress interface. Like suppose you are installing your firewall and somehow you don't want to do any inspection like in a tap mode, or like you want to some just transparent in a firewall, you don't want to do any kind of the content matching inspection policy lookup and all. So in that case, if the inspection is not applicable, then it is directly going to the egress. It is not going to check all this stuff. So this is the second way, treating to the packet. Now the third part, if the inspection is applicable, so that it will go to the next step. So it will check, are this packet is the IPsec SSL VPN packet, or are this is a plain packet? So there are two packets we having in a there could be two packet hitting to the firewall. One is the plain packet, like we don't have the any kind of the IPsec tunnel or like GRE header involved with that packet, encryption and all. Or one could be the IPsec packets. So there is a difference within the packet. So one is the plain packet, there is no header, that is a plain source, destination, port and protocol, whatever the application is going to be apply on that packet, that is going to pass to the next step. But if this is my IPsec packet, then it should have some header applicables. So that header and that packet is also encrypted. So that is the one thing, they having additional header and that packet is encrypted. So that encrypted packet, cannot be read by the firewalls because the packet is encrypted. So how they can be read? So plain packet can be read, but IPsec packet cannot be read. So just stop for the plain packet. Just think plain packet is fine, and we are stopping here only. We are not going to move next step. Now we're talking about IPsec packet. So just think it's the IPsec packet. It's coming. It's passed to the discard state. Like there is no valid packet. Firewall inspection is required, and it moved to the next stage where it found that this packet is IPsec packet. Then what is going to happen? If this is the IPsec packet, then it have to do the IPsec SSL VPN tunnel decryption. They have to decrypt the packet first. So once it will decrypt the packet, that packet become a plain packet. So once this packet will become a plain packet, it have to again go on the first stage, and they have to follow the same process. So now it's become a plain packet, and it will again go to the first stage, and it will check the L2, L3, L4 information, like all the whatever the parameter in having the first stage. Then after it will check this packet is valid or not. If it is valid, it will again check the firewall inspection applicable or not. If it is applicable, then again it's come to this stage. So now it's coming, the same IPsec packet coming to this state, and it is a plain packet now. So now here the story will happen. So is it clear, guys? Like there could be two type of packet. One is encrypted, that could be IPsec. One is a plain. So if there is IPsec packet, they should always decrypt first and then go to the first stage. Then it will come in here. Okay. Then what will going to happen next? So now my packet is become plain here, and now I have to do my session lookup. So first, firewall will in firewall there is two paths. One is a fast path, one is a slow path. Okay, so we'll understand what is a slow path, what is a fast path. So firewall will try to enter to the packet in the
session lookup in the fast path first. Is check, do I have any session? It will say yes or no. If it say yes, then it will directly to the L3, L4 processing, whatever they are going to happen, they will start doing the processing. If there is no session, if suppose I'm the first time coming to the firewall, so if no session I do have previously created, then it will say you have to go in the slow path. So let's understand the slow path and fast path. So the definition says slow path, that means कि मेरा firewall है, उस firewall में इस particular source and destinations के लिए कोई पहले से session नहीं बना हुआ है. So no session match found, so हमें एक session बनाना पड़ेगा, right? Fast path says कि अगर मेरे पास पैकेट आया और मेरे पास पहले से session बना हुआ है, तो मेरे को session नहीं बनाना पड़ेगा, सीधे उस प्रोसेस को फॉलो, मतलब पैकेट को फॉलो करना, प्रोसेस करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट स्टेज के लिए. सो दिस इज हाउ द फास्ट पाथ and slow path is come in picture in the Palo Alto Firewall, and this is very important. You guys should know each and everything about the slow path and fast path, because आप जहाँ भी जाओगे interview and discussion about this Palo Alto topic, they will must ask this slow path and fast. What is the difference between slow path and fast path? The basic difference, the session which doesn't having any kind of the existing session available in the firewall, that is going to always calculate the new session setup with the help of slow path. If packet already having a session available in the fast path, that is going to process with that packet. किसी ने कुछ पूछा? Okay, so हिंदी में तो बता ही रहे हैं. I think शहनवाज, दोनों में मिक्स चल रहा है. बताओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर से रिपीट करता हूँ हिंदी में आपके लिए. सर आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए, बस हिंदी में थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो रहा है. अच्छा ठीक है. तो स्लो पाथ जैसे हमारा है, तो स्लो पाथ में हम ये करते हैं कि मान के चलो कि आपके पास कोई सेशन पहले से नहीं है फायरवॉल के बीच में, फायरवॉल के पास पहले टाइम पैकेट आया, तो वो उसको सेशन लुकअप करेगा. फास्ट पाथ में जाके वो बोलेगा कि कोई तुम्हारे पास सेशन है अवेलेबल, तो यहाँ पे सेशन लुकअप करेगा. अगर उसको बोलता है कि ये सेशन मैच फाउंड, तो वो तो सीधा मतलब उसके पास एग्जिस्टिंग सेशन है, पहले से कोई सेशन पड़ा हुआ है, तो उसको नेक्स्ट L2 L4 प्रोसेसिंग के लिए वो कर देगा कि चलो ठीक है जी करो. नहीं है तो वो फिर स्लो पाथ में भेज देगा कि जाओ पहले तुम सेशन कैलकुलेट करके आओ, फिर तुमसे हम बात करेंगे. ठीक है. तो नाउ थिंक माय पैकेट इज वेरी न्यू एंड देयर इज नो सेशन एंड आई मूव टू द स्लो पाथ. तो मैं अब स्लो पाथ में आ चुका हूँ क्योंकि मेरा पहले टाइम पैकेट फायरवॉल में एंटर किया, हम पहली बार फायरवॉल पढ़ रहे हैं और मुझे नहीं पता है कि कैसे पैकेट को ट्रीट करना है. सो आई जस्ट बिल्ड अ न्यू फायरवॉल. I just connected one laptop and tried to access the internet, and then I just want to do all the stuff in terms of the logical things what is happening in the firewall. So अब क्या होगा स्लो पाथ में, हमारे क्या होगा कि पैकेट हमारा आया, सबसे पहले हमारी फॉरवर्डिंग लुकअप होती है. फॉरवर्डिंग लुकअप इज नथिंग, you just have to remember two things, routing, three things, routing and L2 detail like source, destination, MAC address, what is the ingress and egress interface, and third is the policy based forwarding, PBF. So, तीन चीजें चेक होती है इसमें. ठीक है. So you can see that इसका हम फॉरवर्डिंग लुकअप करेंगे, राउटिंग लुकअप करेंगे, जो भी आप इसको बोल सकते हो, राउट लुकअप, L2 लुकअप. वो फॉरवर्डिंग लुकअप करेगा, सिर्फ लुकअप करेगा, कुछ बनाएगा नहीं. वो सिर्फ खोजेगा कि मेरे पास कुछ इस पैकेट के लिए, सपोज करो कि मेरा कुछ सोर्स आया 10.10.10.10, दिस इज माय सोर्स, ये मेरा डेस्टिनेशन है 20.20.20.20. तो क्या इस सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए मेरे पास कोई राउटिंग है अवेलेबल? क्या मेरे पास करेक्ट, हमारे पास फिब टेबल है, रिब टेबल में अवेलेबल है राउटिंग इसके अवेलेबल, इग्रेस इंग्रेस हमारा इंटरफेस है कि नहीं है, वो चेक करेगा. तो उसको अगर मिल जाएगा तो बोलेगा ठीक है इसके लिए अवेलेबल है, चलो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए वो नैट लुकअप करेगा, सिर्फ लुकअप करेगा. देख रहा, अभी तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ अभी उसको बस खोजना है कि वन बाय वन खोज रहा है वो कि लेट्स डू आई हैव दिस नेट पॉलिसी अवेलेबल इन माय लाइक माय पॉलिसी और नॉट. तो बोलता है कि ठीक है नेट पॉलिसी अवेलेबल है, तुमको इस सोर्स पे जाना है, डेस्टिनेशन पे जाना है, इस पे नॉट नेट पॉलिसी अवेलेबल है. तो हमारी राउटिंग जो होती है हमेशा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हमेशा डेस्टिनेशन बेस्ड होती है.
ठीक है। सो हमारी राउटिंग हमेशा डेस्टिनेशन एड्रेस के बेस होती है, कोई सोर्स चेक नहीं करता राउटिंग में, ठीक है। तो नेट लुकअप में क्या करेगा कि आपका सोर्स नेट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेस्टिनेशन आपका सेम रहेगा क्योंकि डेस्टिनेशन पे लुकअप हो रहा है, ठीक है। बट अगर सपोज करो कि आपका डेस्टिनेशन नेट ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब आपको डेस्टिनेशन 20 पे जाना है और जैसी पॉलिसी चेंज आपने हिट किया, इसको आपने 30 पे कन्वर्ट कर दिया, तो आपका डेस्टिनेशन तो चेंज हो गया। तो वही चीज अगर डेस्टिनेशन आपका चेंज होता है यहाँ पे, तो फिर से आपका राउटिंग दोबारा चेंज होगा, क्योंकि राउटिंग दोबारा चेक होगा, क्योंकि अगेन द पैकेट विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू पैकेट, बिकॉज आपका पहले तो सोर्स 10 था, फिर 20 था, डेस्टिनेशन आपका 20 था, बट आपने डेस्टिनेशन ऐड कर दिया फायरवॉल के अंदर। अब उसने देखा कि अच्छा मेरा डेस्टिनेशन 20 था, अब ये 30 हो गया, तो आई हैव टू डू न्यू लुकअप फॉर द राउटिंग एंड ऑल पीबीएफ व्हाटएवर कॉन्फ़िगर्ड इन द फायरवॉल। फिर उसके हिसाब से फिर वो इवैल्यूएट करेगा नया डेस्टिनेशन के हिसाब से। दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। सोर्स नेट हो रहा तो कोई वरी की बात नहीं है, बट डेस्टिनेशन नेट होगा, देन द फायरवॉल विल डू द second forwarding lookup. You can see that if destination NAT is present on the match of the role, do second forwarding lookup to get फाइनल रियर इग्रेस इंटरफेस। सो माइट भी पहले हमारा 20 के लिए जाने के लिए इंटरफेस कुछ फायरवॉल का अलग था, दिस इज माय फायरवॉल, और इस पे 2 इंटरफेस थे। अगर मानते हैं कि 20 के जाने के लिए मेरा इंटरफेस ये था और 30 के लिए मेरा इंटरफेस ये हो गया, तो फिर से मैं राउटिंग चेक करूंगा तभी तो जानूंगा कि मेरा 30 का ये इंटरफेस है, इसलिए दोबारा री लुकअप करना पड़ेगा इसको। अब मेरा राउटिंग लुकअप हो गया उस पैकेट के लिए, नेट लुकअप भी हो गया, सिर्फ एवोल्यूशन हुआ है, कुछ अभी सेशन उसने बिल्ड नहीं किया है इसने। सो नाउ राउटिंग लुकअप हैज बीन डन एंड पॉलिसी लुकअप हैज बीन डन। द नेक्स्ट थिंग, फायरवॉल सिक्योरिटी लुकअप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब ये सारा कुछ हो गया तब वो जाकर आपको फायरवॉल का सिक्योरिटी लुकअप करेगा कि लाइक ACL चेक करेगा कि क्या इस पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए पॉलिसी अलाउ है या डिनाई है। अलाउ है तो ठीक है, लुकअप पेज गुड। अगर डिनाई है तो simply it will discard the packet. So if you see this, let me go a little bit down. So you can see that if rule match with the allow action, it will go to the next step. If deny, that will discard the packet. Simply it will discard in the slow stage only. It is not going to next stage. But अगर allow है तो ये क्या करेगा, एक सेशन क्रिएट कर देगा यहाँ पे। अब सेशन क्रिएट किया, सब कुछ चेक कर लिया, पहले राउटिंग, नेट, फायरवॉल्स, पॉलिसी, तब एक सेशन क्रिएट करके, और वो क्या करेगा, सेशन क्रिएट करने के बाद अब बोलेगा कि भाई तुम्हारा सेशन क्रिएट हो गया, गो एंड इंस्टॉल इन दिस फास्ट पाथ एंड डू L2 to L4 फायरवॉल प्रोसेसिंग। सो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है नेक्स्ट स्टेप बढ़ने के लिए कि मेरा कैसे स्लो पाथ में हमारा पैकेट आया, क्या क्या हमने चेक किया, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। Pankaj, what if source and destination interfaces are part of same zone? Source and destination interfaces are part of same zone. So good question. अगर मेरा source and destination same zone में होता है, right, still they have to do all lookups. राइट, बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेम जोन के अंदर जब भी हमारा आता है तो हमारे पास पॉलिसी बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, बट स्टिल लाइक हमारा राउटिंग लुकअप जो भी प्रोसेस है हमारा फॉरवर्डिंग करने का, वो लुकअप करेगा अगर सेशन आपके पास नहीं है, क्योंकि हर पैकेट के लिए इधर वो सेम जोन का है या डिफरेंट जोन का, वो सेशन तो बनाना ही बनाना उसको, राइट। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे सेशन बनता है सेम जोन में, इंटर जोन, इंट्रा जोन। वी हैविंग अ लाइक फीचर इन द फायरवॉल दैट वी कॉल इंट्रा जोन एंड इंटर जोन। बाय डिफॉल्ट इंटर जोन में सब कुछ डिनाई होता है एंड इंट्रा जोन में सब कुछ अलाउ होता है। तो अगर मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन सेम ही जोन में बिलोंग कर रहे हैं तो स्टिल वी नीड लाइक सेशन टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, बट हमारा पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है हमें, राइट। मेक सेंस? राइट, ये होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज। सो ओके, सो यहाँ पे हमारा पैकेट आ गया, यहाँ से उठ के हमारा सेशन क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद जाके यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब फायरवॉल से हमारा बहुत कुछ स्ट्रेट हो, अभी पैकेट के साथ बहुत कुछ होना है। इट्स जस्ट नेट एंड राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग लुकअप एवोल्यूशन हैज बीन डन। देन अगर सपोज करो कि इंस्टॉल हो गया, अगर पहले से है कोई पैकेट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, अगर कोई पहले से पैकेट है
ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस फास्ट पाथ, तो अगर उसका लाइक सेशन एक्टिव नहीं है, ठीक है, डिस्कार्ड द पैकेट इफ सेशन इज नॉट एक्टिव, अपडेट द सेशन लाइफ टाइम, डू नॉट डू नॉट इफ एप्लीकेबल। सो अगर पहले से है पैकेट, अगर हमारे पास अगर इसमें अवेलेबल है, उसका भी अगर सेशन एक्टिव नहीं है, तो दे हैव टू गो इन द ऑल द स्टेप्स इन स्लो पाथ एंड दे कम टू हियर एंड लाइक whatever the step they have done, जो भी हमारा पॉलिसी नाइट एवोल्यूशन जो भी इसने यहाँ पे किया है, उसके हिसाब से एक यहाँ सेशन बनाएगा, then it will go for the next step, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए कि SSL प्रॉक्सी। सो SSL प्रॉक्सी आप लोगों ने सुना होगा SSL प्रॉक्सी के बारे में कि भाई SSL प्रॉक्सी क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि जब भी आप किसी पीसी से आप let me show you guys, let's say suppose I'm just going on browser and typing facebook.com, okay, so if you see that HTTPS connection आप देख रहे हो, ये सिक्योर कनेक्शन है, और इस कनेक्शन के जो भी हमारे कम्युनिकेशन है, nobody can read that, okay, so it's certificate based authentication is happening here, and it's very secure and nobody can understand what is going inside of this communication. So you can see that कि इसका सर्टिफिकेट है, कुछ DigiCert से इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो इसको इश्यू किया हुआ है, जो इसका रूट सी है जिसके थ्रू से ये पूरा ऑथराइज ऑथेंटिकेट हो रखा है। तो that's why this is a very secure HTTPS connection. There is two type of connection. One is HTTP as HTTP. So you can see that this is not secure because this is the HTTP connection, port 80, not secure one. So whatever the lab we are using for this, our company for that is a network scheme, that is not secure one because they don't have, security certificate based, security level for this server or particular this, URL. But for Facebook, it's very secure. So let's go on our slide. So अगर आपका पैकेट सपोज करो कि SSL like proxy या फिर मतलब सिक्योर पैकेट है और उसको आपको खोल के देखना है कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, जब तक आप खोलोगे नहीं पैकेट को तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इस पैकेट के अंदर हम क्या भेज रहे हैं, क्योंकि फायरवॉल हैविंग अ लॉट ऑफ फीचर्स लाइक दे कैन रीड इंटायर डेटा ऑफ द पैकेट एंड बेस्ड ऑन द डेटा पैटर्न दे कैन टेक एन एक्शन। व्हाट इज अ फाइल टाइप, सपोज करो कि आपने एक फाइल आप अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड करो, दैट इज अ PDF फाइल, ओके, एंड दैट इज वेरी सिक्योर, और आप उसको खोलोगे नहीं तो पता चलेगा कौन सा फाइल है, तो जब खोलोगे पैकेट को तभी तो पता चलेगा। तो जो खोलने के लिए जो पैकेट का तरीका हम अपनाते हैं दैट इज SSL डिक्रिप्शन। सो विद द हेल्प ऑफ SSL डिक्रिप्शन हम क्या करते हैं, इनक्रिप्टेड पैकेट को डिक्रिप्ट करते हैं, बट दिस इज नॉट लीगल इन मेनी ऑफ द कंट्री, इवन इन इंडिया, ओके, you don't have right to just decrypt the encrypted packet, SSL encrypted packet. So अगर आप ये करते हो तो that is illegal things and might be some punishment can be happen if अगर आप कहीं पकड़े जाते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे कर सकते हो कहाँ पे नहीं कर सकते हो, but that can be done. So अगर वो पैकेट जो हमारा है वो encrypted है SSL proxy पे, उसको अगर decryption अवेलेबल है, अगर उस पर डिक्रिप्शन पे जाना है तो अगर सपोज देयर कुड बी टू सेशन ऐप आइडेंटिफाई फॉर दैट पैकेट डिक्रिप्शन के बाद या डिक्रिप्ट पैकेट इफ एप्लीकेबल होने के बाद, तो अगर सेशन ऐप उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन एक्सेस करना चाह रहा है अगर वो उसको मिला तो नेक्स्ट कंटेंट पे उसका इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, जस्ट अभी इसको होल्ड करो, इस थॉट को मैं फिर से इस पे बताऊंगा आपको। अभी सपोज कि चलो कि आपको पैकेट को आपने डिक्रिप्ट कर लिया, सो पैकेट को आपने डिक्रिप्ट करने के बाद क्या होगा, उस पैकेट के अंदर क्या क्या है, ठीक है। सपोज करो कि आप पैकेट के अंदर फेसबुक एक्सेस करना चाह रहे हो, तो फेसबुक एप्लीकेशन, सो ऐप आइडेंटिफिकेशन इज फेसबुक, सो वो मैच करेगा कि पैकेट के अंदर फेसबुक है। अब सपोज करो फेसबुक के अंदर कंटेंट भी तो कुछ हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीजें लिखकर पोस्ट करना चाह रहे हो जो हेट स्पीच हो अपने कंटेंट में। सपोज करो कि आपने फेसबुक डाला और आपने लिख दिया कुछ भी अगेंस्ट ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट ऑफ द रिलीजन्स, व्हाटएवर द थिंग, सो कंटेंट आपके जो होंगे जो आपने लिखा दैट कैन बी आल्सो इंस्पेक्टेड, सो वो चीजें भी इंस्पेक्ट हो सकती है। और लेट्स थिंक अबाउट अनदर वे, मान के चलो फेसबुक नहीं है, ठीक है, आपने कोई एक कंपनी का PDF फाइल आपने डाउनलोड किया, तो
that is one type of application, that is a PDF Acrobat PDF file, that is one of the application, that PDF file आपने डाउनलोड किया, उस PDF फाइल के अंदर आप कंपनी का कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज शेयर करने की कोशिश कर रहे हो जो प्रोहिबिटेड हो, आप उसको अपलोड नहीं कर सकते हो इंटरनेट पे या किसी को भेज नहीं सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, बट कंपनी को पैटर्न पता है कि भाई अगर ये फाइल हमारा कोई अपलोड करे, डाउनलोड करे, तो इसको फायरवॉल को ब्लॉक करना है क्योंकि इसके कंटेंट में ये इन्फॉर्मेशन है, तो कंटेंट इन्फॉर्मेशन फायरवॉल को बताते हैं, तो दिस इज द कंटेंट लाइक इंस्ट्रक्शन, वो फाइल को ब्लॉक कर देगा, वो नहीं डाउनलोड करने देगा या अपलोड करने देगा, जिस डायरेक्शन में उसको अप्लाई करना चाहो वो कर सकते हो। तो एक तो होता है ऐप आइडेंटिफाई करना, एप्लीकेशन, दैट मींस व्हाट एप्लीकेशन बेसिकली इनसाइड गोइंग ऑफ द पैकेट, उसके हिसाब से वो अपना एक्शन लेगा। दूसरा, उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसके हिसाब से अपना एक्शन लेगा। दूसरी, आप लोग टेंशन नहीं लेना, ये स्लाइड को हम कई बार फॉलो करेंगे क्योंकि हम जब ट्रबल शूटिंग करेंगे और जब वी आर गोइंग टू डू सम लाइव टेस्ट एंड ऑल, सो हम बार बार इसको रेफर करेंगे कि अब हमारा कैसा बिहेवियर है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसको 2-3 बार समझेंगे फिर समझ में आ जाएगा, लैब करेंगे तो जब तक क्लास खत्म होगा तो पूरा पैकेट फ्लो समझ में आएगा। आई नो दैट सम टाइम इफ यू आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट टाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स, बट अभी थोड़ा माइंड मेकअप कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, then we'll do the real things, we'll try to correlate this file again. So अभी हमने मान के चल रहे हैं कि सेशन भी हमारा मिल गया, एप्लीकेशन भी मिल गया और कंटेंट भी इंस्पेक्शन हो गया, देन SP3 में हमारा पैकेट चला गया, ठीक है। बट लेट्स सी कि अगर आपको एप्लीकेशन नहीं फाउंड हुआ यहाँ पे, मतलब Palo Alto डेटाबेस में बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं अराउंड, लेट मी शो यू गाइस, there is one side, the PDF Palo Alto network. So these are the predefined application by the Palo Alto. You can see that how many application we have. See 3589 total application है, ठीक है। इसमें सारे टाइप के एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, लाइक you can find any type of application like Google is one application. Sorry, I'm processing a request. Why sorry, let me back. So there is something wrong with this website today. Let me try to some other application. YouTube is also one application. There is something wrong. Sorry, while processing a request. कुछ तो गड़बड़ इस वेबसाइट में आज डाउन है, कुछ है, एटलीस्ट होना नहीं चाहिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ। So let me click on any other application. So let me just click, just think like Adobe Cloud. This is also application. So you can see that this application depends on the SSL and browsing. I'll discuss about this more about, but just I want to tell you how the application can be checked in the open platform, and this application is synced to the firewall. So all type of application predefined in this Palo Alto database, whatever we have, that is synced to the firewall. अगर वो सारी एप्लीकेशन यहाँ मैच कर दें तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। सपोज करो कि कोई ऐसा भी एप्लीकेशन हो सकता है जो मेरी कंपनी का है, जो Palo Alto को नहीं पता है, मैंने नहीं पता रखा है कि भाई तुमको ये इस एप्लीकेशन को जानना है, तो उस केस में क्या होगा, फिर फायरवॉल कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये एप्लीकेशन तो मैं नहीं अपने डेटाबेस में चेक कर पा रहा हूँ, तब मैं क्या करूँ। तब बोलेगा कि नो है तो जाओ इधर, फिर इधर इस सेक्शन में जाओ, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन सेक्शन में जाओ, फिर यहाँ पे आएगा। फिर एक टर्म होता है ऐप ओवररीड पॉलिसी मैच। अब इसमें क्या होता है कि ऐप ओवररीड क्या होता है कि जब वो एप्लीकेशन के एप्लोपीडिया में नहीं है, फायरवॉल के अंदर एप्लीकेशन वो नहीं है या Palo Alto डेटाबेस में नहीं है, तो आप क्या करते हो, कस्टम एप्लीकेशन बनाते हो अपने फायरवॉल पे, तो वो डेटाबेस में फिर ऐड हो जाता है फायरवॉल के। तो सपोज करो कि यहाँ पे आपके फायरवॉल है, उसके अंदर टोटल अभी कितने 3589 टोटल एप्लीकेशन है, बट आपका कोई एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपने कस्टम बनाया। जैसे ये फायरवॉल बनाओगे, फायरवॉल पे ऐसे ही कुछ नंबर दिखेगा, तो अगर 3589 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3590 में, एक एप्लीकेशन आपका एडिशनल हो जाएगा जो आप कस्टम बनाओगे अपने लिए। वो हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो अगर वो आपने बनाया है कस्टम तो बोलेगा ठीक है पॉलिसी मैच, देन इट विल गो द सिक्योरिटी लुकअप एंड नेट लुकअप ऑल, और इसके बाद फिर रूल अलाउ डिस्कार्ड जो भी होगा नेक्स्ट स्टेप में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, एंड देन इट विल कम इन दिस सेक्शंस ऑल।
बट अगर नहीं होगा, सपोज करो कि आपने एप्लीकेशन नहीं बनाया तो क्या करेगा, देखिएगा कि कुछ सिमिलर पैटर्न बेस, उसका कुछ पैटर्न सिग्नेचर बेस हमारा कोई एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी है क्या, जो मैच कर रहा है, जो एप्लीकेशन का नेचर है उसके सिग्नेचर से कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन मैच कर रहा है कि नहीं। 99 पॉइंट केस में नहीं करता है, बट आई डोंट नो, मैं कभी यूज केस देखा नहीं हूँ किस केस में ऐसा करता है, बट इट विल ट्राई टू चेक। अगर कुछ उसका प्रॉपर्टी, उसका सिग्नेचर मैच करता है तो वो ट्राई करेगा सिक्योरिटी लुकअप करने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी लुकअप बेस्ड ऑन द ऑन एप्लीकेशन वो ट्राई करेगा, फिर इसके बाद वो रूल मैच करने की कोशिश करेगा। तो बट नेचुरल है कि अगर आपका पैकेट का एप्लीकेशन उसमें आपने बनाया नहीं है तो रूल भी तो नहीं होगा आपका, क्योंकि आपने कस्टम तो कुछ बनाया नहीं है। तो देयर इज like 99.99% chance that packet will be discarded, not going to process for the next step. But still that might be one scenario, I don't know that scenario, where the packet can be go for the next inspection, where this rule is also matched. But I'm sure there is no rule if you're not going to create as custom policy with the help of the custom application in the firewalls. So that is how this application identification can be done, and application like override policy can be matched to the this section. Now if you can see that now in this section there is 2-3 things is happening. Content is inspection setup, so like set up the SP3 if security file specifies 8 session discard security will match and QS and all, so no worry about that. Ultimate, after checking on this content inspection setup, so it will try to inspect the content for the whatever the parameter going through the packet. Again it will go to application in SSL and decryption policy match. अगर ये match करेगा, ये अगर yes है तो फिर SSL decryption proxy mark session to be proxied and इसका decryption packet होगा and all. अगर नहीं है तो फिर it will directly go to the content inspection field and it will move to the content inspections. So यहाँ तक I think समझ आया सबको इस ब्लॉक में पढ़ने से पहले, या किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, मैं ट्राई करूंगा दोबारा बताने के लिए स्पेसिफिक, जो भी कोई अगर कहीं पे समझ नहीं आया है कुछ भी। फास्ट पाथ, स्लो पाथ एंड एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। आपको एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन में 2 चीजें याद रखनी है। पहला, एप्लीकेशन आपका मिला है कि नहीं मिला, मिला तो ठीक है कंटेंट इंस्पेक्शन में जाएगा, नहीं मिला तो वो ओवरराइड पॉलिसी अगर हमारा है, अगर कस्टम पॉलिसी हमने बनाया है तब तो प्रोसेस करेगा, रूल मैच डिस्कार्ड जो भी कंटेंट इंस्पेक्शन करना होगा उसके लिए करेगा, नहीं तो इसलिए डिस्कार्ड कर देगा पैकेट। ना अगर सब कुछ आपका सही हुआ, यहाँ पे सब सही मिल गया आपको, या फिर मतलब पहला यहीं पे आपको सही मिल गया, एप्लीकेशन आइडेंटिफाई हो गया, आप कंटेंट इंस्पेक्शन भी आपने कर लिया, तब आता है आपका एक्चुअल दैट इज SP3 कंटेंट इंस्पेक्शन, जिसमें आपका डिकोडिंग, कंटेंट मैचिंग, टनल्ड एप्लीकेशन डिटेक्शंस, जो बहुत ही मतलब डीप लेवल पर जो उसके इंस्पेक्शन होते हैं, एसएल डिक्रिप्शन के बाद हमारे एक पैकेट को चेक करना होता है, वो हमारा SP3 प्रोसेसर जो होता है, अब यहाँ पे सारा कुछ काम करता है। अब क्या करता है कि कई बार ऐसा भी मेरा हो सकता है कि मैंने एप्लीकेशन तो आइडेंटिफाई कर लिया है कि भैया ये एप्लीकेशन मेरा है, लेट्स से सपोज कि यूट्यूब एप्लीकेशन है, बट उसके कंटेंट में कुछ और ही जा रहा है। तो जब मैंने कंटेंट इंस्पेक्ट उसका किया तो मालूम चला कि यार वो एप्लीकेशन जो है उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और नाउ इट्स यूट्यूब से बिकम सम आई कैन से यूट्यूब लाइव चैट और यूट्यूब वीडियो चैट, कुछ और ही एप्लीकेशन बन गया, क्योंकि यूट्यूब के अंदर देखोगे आप तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो इनिशियली उसने फाइंड किया यूट्यूब, बट मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चल नहीं रहा, मैं दिखाता आप लोगों को, मैं दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में फाइल में लॉगिन सारी चीज दिखेंगे आप लोग को। तो यूट्यूब के अंदर ही बहुत सारे सब एप्लीकेशंस होती हैं, तो अगर कंटेंट के हिसाब से अगर मान लेते हैं कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया, तो फिर वो दोबारा से ट्राई करेगा उसका मतलब फिर से इस एप्लीकेशन को आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करने का, फिर इससे इस सेक्टर में जाएगा, ये सब चीजें चेक करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं मैच होता है, अगर सब कुछ सेम है, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, और जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी उस पर अप्लाई करना होगा, या तो अलर्ट देना होगा, सेशन एंड डिस्कार्ड जो भी करना होगा वो उस पर लेगा। अगर सब कुछ हो गया यहाँ पे, ठीक है, then packet is about to egress to the firewall.
अब इग्रेस करने से पहले दो कंडीशन हो सकती है, या तो पैकेट को आपने पहले यहाँ पे डिक्रिप्ट किया हो, मतलब आपने उसके इंक्रिप्शन हटा दिया हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप अगर आप पैकेट को बाहर भेजोगे तो उसको री इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, वरना उसकी सिक्योरिटी तो ब्रीच हो जाएगी ना। तो आपको बिफोर सेंडिंग द पैकेट यू हैव टू री इनक्रिप्ट। या दूसरा केस ये होगा कि आपका पैकेट जो है सीधा आपने डिक्रिप्शन किया ही नहीं, तो सिंपली वो सीधे विदाउट री इनक्रिप्शन इट विल गो टू द फॉरवर्डिंग प्रोसेस, जहाँ पे वो इग्रेस इंग्रेस इंटरफेस फाइंड आउट करेगा और उस पैकेट को फिर से बाहर निकाल देगा, ट्रांसमिट कर देगा। बट इन केस आपका फिर से आईपीसेक टनल का पैकेट है, तो उस पैकेट को इग्रेस में आने के बाद फिर से उसको इनक्रिप्ट करेगा पैकेट को, और इनक्रिप्ट करके भेजेगा और फिर से आपको दोबारा ट्रांसमिट करेगा इसको, क्योंकि आपका आईपीसेक पैकेट हमेशा इनक्रिप्ट होकर आईपीसेक टनल टनल इनक्रिप्शन पैकेट इनक्रिप्शन से यहाँ पे आपका इनक्रिप्टेड पैकेट थ्रू द टनल जाएगा बाहर नेक्स्ट स्टेज में। तो ये एंटायर प्रोसेस हमारा है थ्रू द स्लो पाथ, फास्ट पाथ, एप्लीकेशन, कंटेंट इंस्पेक्शन एंड इग्रेस। नो वरी, अगर अभी भी समझ नहीं आया, आई एम सेइंग जब हम पढ़ेंगे अभी अपना स्टार्ट करेंगे तो इसको कई बार हम देखेंगे, इवन एप्लीकेशन आईडी में भी देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें सारी चीजें होता है। फिर स्लो पाथ में हम देखेंगे कैसे नेट रूल हम एवेल्युएट करते हैं। इवन हम डिबग, जब मैं बताऊंगा डिबग लगाकर सारी चीजें ट्रबल शूटिंग जब करेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारा स्लो पाथ होता है, और फास्ट पाथ जाने से पहले ही हमारा स्लो पाथ में पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है, वो सब चीजें भी हम देखेंगे। तो दिस इज अबाउट द पैकेट फ्लो। दिस विल बी अवेलेबल So what I was just trying to say, I forget the name who was asking that question. So if you see that like discarding the packet, we having a multiple option for discarding the packet. So the whatever we just study here, there's little bit description also given in this document also. So if you guys go and learn, then probably you can having the great understanding. So let me quickly just go through about that. So you can see that the mismatch of the Ethernet type and IP version. So that could be the one reason. अब आपका Ethernet type अगर match नहीं कर रहा, आपने एक तरफ से ISL यूज कर रहे हो, एक तरफ से .1Q somehow वो मैच नहीं कर रहा है, IP वर्जन मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी पैकेट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ट्रंकेटेड IP हेडर वो होता है, उसकी वजह से भी डिस्कार्ड। IP प्रोटोकॉल नंबर 0 अगर सेट है तो हो जाएगा, TTL 0 है तो भी हो जाएगा। लैंड अटैक, पिंग ऑफ डेथ, आई डोंट नो कि इसका क्या प्रोसेस कैसे होता है। मार्टिन आईपी एड्रेस, ये सब चेक आईपी चेकसम एरर्स। सो दीज आर द क्राइटेरिया। अगर ये सारी चीजें मैच होती हैं पैकेट के अंदर, सो प्रोबब्ली यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ थिंग इवन आई डोंट नो। तो इस केस में हमारा पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेज में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा, बाकी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा आइडिया हो जाएगा। तो प्रॉब्ली ये डॉक्यूमेंट आपके लर्निंग पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। मैंने बोला है आज ही अपलोड करने के लिए, देखो उन्होंने अपलोड किया है कि नहीं किया है। सो दैट इज अबाउट दैट पैकेट फ्लो। नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू यू गाइस टू जस्ट गेट, या टेल मी। SSL encryption is decryption is different from the slide which you have shown VPN decryption. Is there any difference between them? See on the first phase, yeah, on the first phase, जी आपने यहाँ ये करा है ना IPsec SSL decryption हुआ है यहाँ पे, ये वाला decryption mechanism और नीचे वाला decryption SSL decryption दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं, completely अलग है, completely अलग है, completely अलग है। यहाँ पे डिक्रिप्शन इसका ये है कि जो हमारा इनक्रिप्टेड पैकेट है, जो एल्गोरिथम होता है आईपीसेक टनल में, जो डिफी हेलमैन हमारा होता है, MD5 इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, या उसके हिसाब से हमारे पास कीज होती है, मतलब मास्टर की हमारा होता है, पब्लिक प्राइवेट की, पब्लिक प्राइवेट, तो उसके हिसाब से पैकेट को डिक्रिप्ट करता है, स्क्रिप्ट को खोलता है। लेकिन वहां पे कुछ अलग होता है, वहां पे सर्टिफिकेट बेस होता है। मैं बताऊंगा कैसे होता है सर्टिफिकेट, कैसे है सर्टिफिकेट। मैंने पढ़ा था SSL डिक्रिप्शन में भी पब्लिक प्राइवेट की ही होती है, मीन फायरवॉल इज इन्वॉल्व इन बिटवीन। हाँ, पब्लिक प्राइवेट की ही होती है, लेकिन एक होता है हमारा, हाँ, एक होता है हमारा मास्टर सीक्रेट की, राइट, जो हमारा SSL डिक्रिप्शन में यूज होता है। यहाँ पे हमारा जो होता है सिमेट्रिक की कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा दोनों के अंदर। रुक जाओ, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। दोनों के अंदर थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, हाल हम पढ़ेंगे आगे, बट VPNs। So, जो आप बता रहे थे कि अनलॉफुल है, दैट इज SSL डिक्रिप्शन।
राइट? देखिए यहाँ पे जो होता है ना आई की एक्सचेंज होता है, हाँ, एन्क्रिप्शन सिमेट्रिक की के थ्रू होता है, राइट? यू कैन सी दैट द पब्लिक प्राइवेट की एंड इफ यू हेल्प एंड ऑल सिमेट्रिक की होगा तो उस पैकेट को खोल सकता है, एन्क्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट कर सकता है। जब इस साइड से लॉक लगेगा तो हो जाएगा, ठीक है? तो देयर इज सिमेट्रिक असिमेट्रिक की। बट हम जब उसकी बात करते हैं ना, किसके बारे में बात कर रहे थे? कंटेंट आईडी, एफ आईडी, डिक्रिप्शंस। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। लेट मी शो यू, ऑल्दो आई कैन टेल मोर अबाउट व्हाटएवर रिटन हियर, बट जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट। सो इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारा सर्टिफिकेट बेस हमारा सब कुछ चलता है, राइट? तो क्लाइंट इनिशिएट एसएसएल सेशन टू द सर्वर, इसके बिहाफ पे फायरवॉल भेजता है, फिर फायरवॉल से कुछ रिप्लाई आता है, फिर उसके आता है, फिर इन दोनों के बीच आता है, फिर इसके बाद क्या दोनों का सर्टिफिकेट होता है। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट होता है मास्टर की, एमएस की होता है। पहले प्राइवेट पब्लिक की कैलकुलेट होता है, देन ऑल, फिर इसके बाद मास्टर की होती है। जब दोनों के बाद मास्टर की आती है, देन दे विल एबल टू कम्युनिकेट। एसएसएल टनल एस्टैब्लिश बिटवीन द क्लाइंट एंड फायरवॉल सर्वर, डिक्रिप्ट एसएसएल ट्रैफिक फ्रॉम द सर्वर एंड क्लियर टेस्ट, अप्लाई सिक्योरिटी पॉलिसी टू द ट्रैफिक एंड री-एन्क्रिप्ट द पुश टू द क्लाइंट। सो बेसिकली इसमें की चेंज हो जाती है, दैट इज नॉट सेम की व्हाट इज यूजिंग इन द IPsec टनल। इसका थोड़ा सा अलग होता है, मैं कवर करूंगा उसको डिटेल में, तब तो समझ में आ जाएगी, ठीक है? थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट आर सेम, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आर सेम, बट थोड़ा स्लाइटली इसमें सर्टिफिकेट की वजह से चीजें कुछ थोड़ी ऐड हो जाती है, ठीक है? तो अभी उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंक्रिप्शन IPsec टनल पैकेट को खोलने के लिए सिर्फ होगा, डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करने के लिए। बट यहाँ पे SSL जो हमारा SSL प्रॉक्सी, इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एग्जैक्ट कंटेंट हमारा जो होगा पैकेट के अंदर, एक्चुअल पेलोड होगा, उसको खोलने के लिए होगा। उसमें सिर्फ हम पैकेट के अंदर देखेंगे कि क्या हमारा सोर्स डेस्टिनेशन हेडर वगैरह है, वो सारी चीज खोल के देख के उसको प्रोसेस करेंगे। फास्ट प्रोसेसिंग में तो हमने री इनक्रिप्ट कर दिया उसे बाहर भेजते हुए। हाँ, री इनक्रिप्ट कर दिया, राइट। लेकिन ऊपर वाले में तो री इनक्रिप्ट दिखाया ही नहीं कहीं पे भी, ऊपर वाले स्लाइड में, ऊपर यहाँ पे IPsec का जहाँ खुला हमने ये पैकेट, हाँ, इसको री इनक्रिप्ट करके फास्ट पाथ के अंदर नहीं भेजेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ भेज रहे हैं, देखो यहाँ पे टनल भेज रहे हैं, यहाँ पे री इनक्रिप्ट करके यहाँ पे आया इग्रेस पे, तो इसको फिर से इनक्रिप्शन कर रहे हैं। यहाँ पैकेज तो खुल गया ना आपका, यहाँ बिल्कुल गॉट इट। यहाँ पे खुल गया, लेकिन टनल के एंड पे हो गया, ठीक है, टनल के एंड पे हो गया, फिर से यहाँ पे यहाँ री इनक्रिप्ट हो गया, ठीक है? तो इट्स क्लियर, ठीक है? मैं एक छोटा सा मतलब हम लैब करते हैं अब, ठीक है? कि ये आई थिंक हमने अभी कवर कर लिया, स्टिल अगर कुछ डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे, बट लेट्स डू सम बेसिक लैब फॉर द फायरवॉल। तो सपोज करो कि आपको एक नया फायरवॉल मिलता है, ठीक है? और आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। सपोज करो कि आप अभी शिफ्ट में हो, या फिर आपको कोई ऐसा डिप्लॉयमेंट का मतलब टास्क मिलता है कि आपको एक फायरवॉल लगानी है। तो आपने पालो अल्टो से फायरवॉल खरीदा, That could be हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो ही फायरवॉल हो सकती है। जो अभी हम यूज कर रहे हैं दैट इज VM सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हमारा फिजिकल बॉक्स हो सकता है। ये फायरवॉल साइट पे जाएगा, लेट्स सपोज द फिजिकल बॉक्स साइट पे जाएगा। साइट पे जाने के बाद उस फायरवॉल को आपके जो फील्ड इंजीनियर उसको रैक में लगा देगा, राइट? रैक में लगाने के बाद उसको पावर दे देगा, पावर सप्लाई भी दे देगा उसको, राइट? नाउ फायरवॉल इज टर्न ऑन। अब आपको चाहिए क्या? अब उसको रिमोट एक्सेस चाहिए, क्योंकि आप तो सपोज करो किसी और कंट्री में लग रहा है, UK में लग रहा है, US में लग रहा है, या सिंगापुर में लग रहा है। सो आई थिंक आकाश इज आस्किंग समथिंग। ओके, या आकाश, टेल मी। Yeah, could you please repeat it again? Actually, my internet is not working, so Okay. I skipped some. तो मैं ये बता रहा था कि सपोज करो कि आपको एक नया फायरवॉल लगाना है अपनी कंपनी के अंदर, या किसी ऑफिस के रिक्वायरमेंट में नया फायरवॉल रिप्लेस करना है या नई फायरवॉल लगाना है, उसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है? तो आपको टास्क आता है, आप शिफ्ट में हो, आप इंजीनियर हो, आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करना है, बिल्ड करना है, तो आप क्या करोगे? तो आई वाज टेलिंग कि चलो आप फील्ड इंजीनियर वहाँ गया फायरवॉल लेके, कोरियर से डिस्पैच हो गया या जैसे भी आ गया फायरवॉल साइट पे, फील्ड इंजीनियर गया, उसको रैक में माउंट कर दिया फायरवॉल को, पहला स्टेप। उसकी लेबलिंग वगैरह कर दी, रैक में माउंट कर दिया उसने, लेबलिंग कर दिया उसने एंड रैक में माउंट कर दिया, पावर लगा दिया उस पर, ठीक है? पावर लगा के उसने सब कुछ ऑन कर दिया। अब आपको उसका रिमोट लेना है। तो देयर इज टू वे ऑफ टेक रिमोट, या तो उसको आपको कंसोल देगा वाया सीरियल केबल के थ्रू जो होता है, ठीक है? और दूसरा तरीका है, वो भी कंसोल ही होता है मैनेजमेंट पर, दैट इज RJ45 के थ्रू। जो केबल होती है वो सीधे लैपटॉप में कनेक्ट करेगा, और RJ45 वन एंड पे आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करेगा, वन एंड पे फायरवॉल पे कनेक्ट करेगा और आपको दे देगा। तो सबसे जो आई कुड से
100% यही प्रोसेस यूज होता है RJ45 वाला, दैट इज AGS कंसोल को यूज नहीं करता क्योंकि ये काफी इजी होता है इसको करने के लिए। तो कंसोल दे देगा और मतलब आपको RJ45 करके लैपटॉप में कनेक्ट कर देगा। तो प्रोबेबली आपको कुछ यहाँ पे बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एफी को गाइड करने के लिए। सपोज करो एफी को नहीं पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। तो जो भी हमारा ब्रांड न्यू फायरवॉल होता है, ठीक है, कोई भी आप ब्रांड न्यू फायरवॉल खरीदते हैं तो उसके अंदर प्री डिफाइंड एक मैनेजमेंट आईपी एड्रेस होता है। कोई भी खरीदो फायरवॉल आप 192.168.1.1 ये आईपी होता है /24 का, ठीक है। ये फायरवॉल के अंदर पड़ा होता है बाय डिफॉल्ट, मैनेजमेंट पोर्ट पे ये आईपी पड़ी होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, ये आईपी आपको पता है हो गया आपका। लेट्स से सपोज यहाँ पे एक उसने लैपटॉप लिया और यहाँ से लैपटॉप लेने के बाद इस पे से एक पोर्ट पे यहाँ से यहाँ पे केबल लगा दिया जो आपका RJ45 है। RJ45 केबल लगा दिया उसने। फायरवॉल पर आईपी आपका कॉन्फ़िगर्ड है ये वाला, माइट भी आपका लैपटॉप पे आईपी पड़ा होगा 10.10.10.10/24। ये दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऑलवेज एडवाइस टू एफी कि बॉस इसकी आईपी ना तू चेंज कर दे। तो एफी विल व्हाट विल डू, आप एफी को बोल दो कि 192.168.1.10 ले ले, कुछ भी ले ले, व्हाटएवर द आईपी +24 लेस देन 254 तक कुछ भी ले ले, 1 को छोड़कर और 255 को छोड़कर कुछ भी ले ले। तो उसने सपोज कर 10 ले लिया आईपी एड्रेस। जैसे वो 10 लेगा और उस पर अपना सबनेट मास्क 255 कॉन्फ़िगर करेगा, तो ये लैपटॉप जो है इस फायरवॉल को पिंग करना स्टार्ट कर देगा। दैट मींस कि लैपटॉप कैन एबल टू रीच टू द फायरवॉल। अब जैसे ही पिंग करना स्टार्ट करेगा वो HTTPS ब्राउजर में जाएगा और उस आईपी को HTTPS करेगा और आईपी डाल देगा 198.168.1.1 और इस फायरवॉल की इसकी GUI एक्सेस मिल जाएगा। तो ये भी हम लैब करने वाले हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। माइट भी हमारे लैब में देयर कुड बी 2 थिंग्स। हमारे लैब में DHCP से आईपी एक बार मिल जाएगा, ये कर सकते हैं, और एक बार स्टैटिक करके देख लेंगे। हो सकता है कि VM में हमारा कुछ VM में ये आईपी बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, कुछ में नहीं मिलता है, बट फिजिकल फायरवॉल आप खरीदोगे तो 100% मिलेगा। इट्स अ प्री डिफाइंड। लेट मी शो यू गाइस documentation. Palo Alto Firewall. Installation probably. See that, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा हमें। देखो जो मैं बता रहा था कि कुछ भी करोगे आपको ये आईपी बाय डिफॉल्ट फायरवॉल पड़ी होती है। नो नीड टू चेंज द आईपी एड्रेस ऑफ योर you may need to change the IP address of your computer and IP address range from this range such as the 210 whatever you want to take, आप ले सकते हो, बट फायरवॉल पे प्री डिफाइंड आईपी एड्रेस पड़ी होती है। और ये देखो बाय डिफॉल्ट द फायरवॉल हैज द आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड यूजर नेम पासवर्ड इसका एडमिन होता है बाय डिफॉल्ट। तो जैसे ही आप HTTPS करोगे इस पर्टिकुलर आईपी को और आपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड का सेक्शन आ जाएगा और वहां पर आपको एडमिन डालना है, तो आपको फायरवॉल का एक्सेस मिल जाएगा GUI। ठीक है, क्लियर? All, sir. Hello. Sir, all firewall with a GUI interface. Yes, all firewall. जो भी आपका इवन पैनोरामा है उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। जो भी आपका फायरवॉल है पेलो अल्टो का, उसमें आपको बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस रहता है, ठीक है, और यूजर नेम पासवर्ड यही रहता है आपका 190 admin.admin। ये डॉक्यूमेंट है, मैं आप लोग को देता हूँ, आप लोग सब पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो इसमें आप नीचे आओगे तो इसमें आपका इनिशियल सेटअप में आप DNS DHCP सब कुछ डिफाइन कर सकते हो। वो सब चीज़ हम बाद में कवर करेंगे, वो हमारे रिलेवेंट नहीं है। हम पहले कुछ करेंगे, हम एक फाइल को एक्सेस लें। दैट इज सेकेंडरी थिंग कि आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है तो आपको DNS की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उस फायरवॉल से रीच करने के लिए एंड ऑल, प्रॉक्सी सर्वर एंड NTP एंड ऑल। सो उसको हम बाद में कवर करेंगे।
So let's do it. So अभी मैं यहाँ पे हूँ और अभी आप लोग लैब का एक्सेस आप लोग को मिलेगा, तो देखो क्या करना होता है लैब पे। लैब एक्सेस आप लोग को मिलेगा, तो अगर आप लोग जाओगे यहाँ पे तो कुछ इस तरह का आप लोग का इंटरफेस मिलेगा। एंड यहाँ पे इंटरफेस मिलने के बाद यू विल फाइंड this is my badge which I taken in past, but I just put it all live here, and I just create one more lab in this section. So take new batch, put a name. Okay, so I'm just creating one new batch lab here. So this window is here. अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पे लेफ्ट क्लिक करके एक नोड पे क्लिक करूंगा एंड मैं जाऊंगा नीचे और यहाँ पे पालो आल्टो है, इसको सेलेक्ट करूंगा। इसमें दो iOS हैं, एक 8.0 और 10.0। तो मैं लेटेस्ट वाला लूंगा, 10.0 वाला। आई टेक लेटेस्ट वन, बाकी सब वैल्यू को डिफॉल्ट रहने दूंगा। क्लिक ओके, से मेरी फायरवॉल हो गई। लेट्स से सपोज ये साइट पे मेरी फायरवॉल आ गई। तो अभी दो तरीका है। अभी मान के चलो कि इस पे RG45 हम कनेक्ट करके अगर हम पीसी लगाते हैं यहाँ पे इसके मैनेजमेंट इंटरफेस से, लेट्स डू इट। लेट्स से सपोज मैं एक मैनेजमेंट पीसी लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ मैनेजमेंट इंटरफेस पे, ऑन फायरवॉल मैनेजमेंट इंटरफेस। द सेम थिंग आई वाज टॉकिंग। तो इस पीसी का मैं आईपी चेंज कर दूंगा और यहाँ पे 192.168 आईपी डाल दूंगा, तो इस पीसी से मैं इस फायरवॉल को एक्सेस कर लूंगा। दिस इज द वन वे। So let's do it, but what I'm suspecting, this is a VM, so इसके पास कोई IP नहीं होगी, but मैं फिर भी देखते हैं क्या इसके पास मिलती है। IP नहीं होगी तो हम स्टैटिक डाल के फिर इससे हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो let's do it, let's wait. So I just started PC and this Palo Alto Firewall, and these are connected to the RG45. Now just click on this CLI because this is the VM, so you can see that. So it is booting. It will take some time, so we have to patience. Let me start the PC also. It's a window PC. Meanwhile, कुछ discuss करना है तो कर सकते हैं. Anyone having anything coming in mind? Because it will take some time. Right. How we can configure this firewall? Sorry. Like I mean, I want to I want to do the practical labs. How I can do? I mean, I don't want to access over there. Can we install it on our own machine? Yeah, I can help out to install your machine if you want. Like we have to integrate it inside the GNS or EVE or virtual environment. You can do either of the way. Like if you want to integrate with GNS, you can do that. You can do in the EVNG, you can do it. Or you're having like virtual environment like AWS, Azure Cloud. From there, you can take a subscription. You can buy from there, or you can buy a real firewall. Like there is multiple ways. That would be highly costly. Yeah. Right. Even when GNS is available or that EVG that is available. Yeah, EVNG and GNS, that both is like can be integrated. But I'm finding it difficult to get the PAN-OS over there. Okay. Do you have the PAN-OS image? Which version you are looking for? I'm looking for 9 or 10, whatever be available. Okay, so in this laptop, actually, I have my own topology and even the PAN-OS available. I think it would be great. It would be great if you give a class on that, how to configure, so all of us can configure it and we can do practical. With you. No harm for me. Actually, it's really good. Even for the previous batches, I have like given this kind of the stuff. I'll help you guys. No worry but the minimum requirement would be like your laptop should have at least 8 GB of RAM, or right. Like some space should be also available right. for the firewall stuff. So that right. is the minimum criteria, and the processor should be high, at least i5 and i7. Right. So any stuff with the cores also? Sorry? Do we have multi-cores also?
we have to look in the processor also about the multi-cores. Is it okay? Oh yeah, we required like if I show you in my EVNG, let me show you. I have a, I think this is my own EVNG, so you guys can see here. So when will provide lab access? Sorry, what was the question? So when will provide lab access for practice? I believe already you have. They don't given like in portal. Okay, portal, because we not get any lab. Whatever lab I'm going to create here, you'll get access to after that, the lab. Okay? Yeah, whatever lab I'm just going to create here, you'll get the direct access, and you just have to log into your portal. So any high configuration required for system? Yeah, that's what I'm trying to show. You see that like I have allocated like 6 processor out of I think how to check how many processor I have. Oh, I believe it's a 12 processor or 14 processor I have. Out of that, I have assigned 6 processors. This is inside the VM. Inside the VM, we can do the changes for the processor. Yeah, that's really depends upon. It depends upon the outside processor? Yeah, definitely. If you having just 6 processor of your laptop, and you just assign the 6 processor of the VM, then the laptop will not going to work. So you have to just play with the 50-50 kind of stuff. Right. So you can see that. So what is your machine configuration? My machine configuration. Physical machine. Physical. Let me show you. i7 with 8 GB. How can I show you? Let me show you. So that you can see that 16 GB RAM, 11th generation. That is Right, i7 16 GB RAM. That's yeah. 64 gigahertz is there. Yeah. Right. So this is the full touch what I Dell laptop. There's advanced laptop I have taken. So that working fine for me. Even my SDWAN lab is running, Palo Alto is running. There's like routing switching quite normal. So what is the Sir, I have a i5 third gen. 16 GB. It would work smoothly or not? Should work. How much RAM you have? 16 GB. That should work. That should work. No issue. Okay. But generation is less. Third generation. No worry. It should work. Just try to work. It will work. Just try to install. Okay. So I have only 4 GB and third generation i3. That is not going to help. You need to upgrade it. So you need to upgrade the RAM. At least you need to upgrade RAM. At least 8 GB. Yeah. Either you can do, guys. You can do 2 things. You can increase the RAM as well as you can change your hard disk. Hard disk also. Yeah. If you go for SD, it would enhance a certain speed over there. Go for SSD. Sir, are you using ESXi server? Yeah, I'm using the work in ESXi. VM player, that is ESXi. No sir, ESXi server वो जो दूसरा वो लोग देते हैं सर्वर पे डालने के लिए. देखो दो आते हैं, VMware का आता है ESXi और एक आप ESXi अलग होता है, VMware अलग होता है. तो आई एम यूजिंग VMware यार वर्कस्टेशन. ESXi अलग होता है. वही उसलिए बोला था. एक्चुअली मैंने ESXi पे बना रखा है, बट मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें कि मेरी डिवाइस मेरे लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होती है. अगर जैसे मान लीजिए सिर्फ उनका जो GUI पेज है वो कनेक्ट हो रहा है, अगर मैं EVNG पे क्रिएट करता हूँ लैब, तो उसमें राउटर्स में कर सकता हूँ, बट मैं फायरवॉल से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ. अच्छा, आप इसको EVNG का डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो. ये रिकमेंडेड है. इस पे करोगे तो सब कुछ हो जाएगा आपका. इसको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसको फॉलो करोगे तो हो जाएगा आपका. ठीक है सर, जब आप वो करवाएंगे या कहते लैब करवाते हैं, तो मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, आप मुझे बता देना उसको थोड़ा सा. ठीक है. तभी देखो मैंने इसको चालू किया, तो अभी देखो इस पे कुछ आ रहा है यूजर नेम पासवर्ड डालने का. तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा इसका? एडमिन. देखो मैं डाल रहा हूँ तो क्या बोलता है इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड. सो नो नीड टू वरी. आफ्टर 9.0 iOS अगर आप फर्स्ट टाइम फायरवॉल को लॉगिन करने की कोशिश करते हो, स्टार्ट करते हो, तो 2-4 मिनट काम नहीं करता. एटलीस्ट 180 सेकंड तो मान के चलो, 120 सेकंड. वो कई बार 5 मिनट भी लग जाता है. 10 वाला तो कई बार टाइम लग जाता है. तो सम टाइम इट्स नॉट वर्किंग. वी हैव टू वेट
and then after it will Any take. specific reason for it? This is the behavior of the VM. So you can see now it is asking the password, old password. So दो चीजें ध्यान रखनी है. अगर आपके पास iOS है 9 डॉट इससे नीचे का बिलो 8 सीरीज फैमिली का है, तो आपका पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एडमिन आप डालते रहो, आपका काम चलते रहेगा. ठीक है, एडमिन डालते रहो काम. बट 9 का है, अगर आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो एडमिन तो आपका चलेगा, बट आपका पासवर्ड चेंज तुरंत करना पड़ेगा फर्स्ट लॉगिन के साथ ही. ठीक है, 9.0 तो हमारा अभी 10 का यूज कर रहे हैं, इसलिए मांग रहा है. सो अभी बोल रहा है कि आपको पुराना पासवर्ड डालो. सो आई विल पुट द ओल्ड पासवर्ड हियर एडमिन. सॉरी, तो आपको वेट करना है 2 मिनट, तो कम से कम वेट करना है फायरवॉल स्टार्ट होने के बाद. जब ये बूट हो जाए, बूट होने के बाद एटलीस्ट 2 मिनट वेट करो, उसके बाद आपके यूजर नेम पासवर्ड सही चलेगा. दिस इज द बग, नथिंग एल्स फॉर द VM. Just you have to remember. So I'll just put in admin and I'm just setting a new password, Pankaj12 e caps Pankaj12. So I just stated that. So मैं firewall में अभी मैं मान के चलो कंसोल केबल से लॉगिन हूँ GUI में, नॉट लाइक RJ45 के साथ GUI लॉगिन होता है, तभी कंसोल से लॉगिन हूँ सीरियल से. Although we are not using serial here, but this is the VM, so we can think about that. Also, how it is going to look like in the serial and console, serial and the RJ45 in the GUI. So now वो मुझे चेक करना है कि इस फायरवॉल का मैनेजमेंट IP कुछ है या नहीं है, जो मैं बात कर रहा था 192.168.1.1. So वो IP इस पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है. So how can I check that? There is one command. So system info, just you have to remember, always हमेशा यूज होती है कमांड. So system info. So see that I told you this is the VM. That's why we don't have any IP address unknown, netmarks unknown, default gateway unknown. We don't have anything. So इसका दो तरीका है, इसको हम DHCP से साइन कर सकते हैं या स्टैटिक भी दे सकते हैं. So अभी हम स्टैटिक देते हैं DHCP से. आपको मैं बता दूंगा कैसे DHCP से ऑटोमेटिक ऐप मिल जाएगा इसको. सो वो भी हम करेंगे, हमेशा वही करेंगे DHCP वाला, बट फर्स्ट टाइम स्टैटिक कैसे हम साइन करेंगे. तो मैं क्या करूंगा कि जो IP हम बात कर रहे थे यहाँ Palo Alto डॉक्यूमेंटेशन में देखा था हमने यहाँ पे, वही IP मैं इसको दे दूंगा पहले. सो वी थिंक लाइक वी हैविंग अ ब्रांड न्यू फायरवॉल. आई विल ट्राई टू एक्सेस दैट. So I'll go in the configuration. This is the first things we are going to do that. Just put the command configuration and then you enter this mode. And you have to run set device configuration system type static. So this is the first command you have to write. Set device config system type static. So you are going to define the configuration statically for this device. So this is the first command I have. If you're not going to put this command, then your probably management IP is not going to take. So this is the first command I have just put there, static. So if I'll go there, just let me exit from here. And let me run. So system here. Okay, so nothing has changed. I was thinking there should be some change. Here. And then this is static. State device config system. Then we'll see we have a lot of things. So you can see this IP address. So I'll just go and define. Even you can use the question mark to check that what all information we have. So IP address. So after IP address, you have to just give the IP address. So I'll just give the IP address 192.168.1.1. This was the. Then we should get the option for the net mask. Okay. So if you see that in this, we having an option in net mask. So I'll just type net mask. This is syntax we have to just remember. 255 and 0. These are the two things. I can define a default gateway if really required. Even I not define a default gateway, it is going to work for me because it is going to stay in the same broadcast domain for this lab.
So if you click here, then we'll find some option for the default gateway. So you can just define a default gateway also, whatever you want to define. So here I'm not defining any default gateway because this is a firewall management interface IP I just configured. And the same subnet I'm going to configure on this PC and we'll try to access this firewall. So I'll click OK. Then the most things what we have to do, till we have done the configuration, but this configuration is not applied to the firewalls until or unless we are just doing the commit. Once we do the commit, this configuration is going to apply on the firewall. So I just did the commit. So you can see this job is running. Probably it will take some time to commit this configuration. Once it will commit, we'll try to see what configuration is reflecting over the source system info. Is it changed or not? So let's wait for a few more seconds. So it's completed 55%. You can see that now. So it's 98%. So it will shortly complete. So it's taking time, but now it's completed. So you can see that after commit, my configuration has successfully completed. So it's a good sign for me. So nothing wrong with my configuration. I'll simply exit from this mode and I'll try to run this command. So system info. And probably I do have IP address now. So whatever I was talking in this documentation in initial configuration, so when you buy the firewall, this should be the IP address available by default in your firewalls. So now it's good. And even you can see this IP address is a assignment through the static lib. Earlier it was a DSCP, but now it's a static. So three things have been changed after this configuration. Rest everything is the same what it was available in the earlier. So it's clear, guys. Now it's time to this PC. So this PC having, let me check what is IP address on this PC we have. So I'll go there and configuration and I'll found this PC having this IP address. So do I able to communicate from this IP to this IP address 192.168. Something? No, right? So I have to change the IP address of this PC from the same segment what I apply on the firewall. So let me go that and change that. Guys, please ask me if you're not able to understand anything. I'm assuming it's a pretty straightforward and everyone is understanding. Never hesitate to ask any question. So I'll go there and I'll just change the IP address 192.168.1.10. And here I can give a gateway. I cannot give a gateway. It's my choice. But let me give this firewall as a gateway. 68.1.1. Okay. I can give a DNS, not required for now, but it's optional. You can give or not give, but I'm just giving here. Leave it. I'm not going to give this DNS. So I just giving this IP address here in gateway. Okay. So probably it's fine. It's trying to identify something and it's connected to the network. This PC. Now check the IP address of this PC. Now it's changed. So now my firewall and PC having the same series of IP address with the RJ45 cable. So this is my RJ45 cable here. RJ45 cable, and this one having the IP 192.168.1.1 and 192.168.1.10. So now I will just quickly verify whether my PC is able to ping this firewall or not. 192.168.1.1. So it is replying. That's a good. So if it is replying, then I'll quickly go on the firewall. Try to access with the GUI. So I'll try to open my browser. And from browser, I'll just type HTTPS and my firewall IP address 192.168.1.1. That's all. And let's wait for the magic if it is going to happen or not. See,
Now it is asking your connection is not private, but still unsecure. That is the warning message, and we can just proceed with unsafe. Then probably we have beautiful window for the Palo Alto GUI. And here I'll just go there and just enter the admin, and my password is a P in caps, Pankaj12. Okay, so just remember, this is my password. You guys can log in and Pankaj12, and this is going to stay entire of the lab. So once I enter my credentials, Sir, CLI mode, CLI command is ditto like Juniper Firewall. looks similar. Juniper and this and the concept are similar, but not exactly the same ditto. 100% no same. Concept are same. Like they also use set and all, commit and all. It also do the same things. So you can see that now I'm on GUI dashboard. Okay, and you can see in this dashboard there's a couple of things. So the configuration I just made, what the 3 commands configuration I have made here, you can see that, and commit, config log, it is showing in my dashboard. Or okay, admin has done this change on this time. So this is the powerful of this, dashboard itself. It's showing all the historical logs, whatever recently change has been done and who done. See, one time I've done with the web, that is RJ45, and one time I've done the console, that is the CLI. I have taken this, right? So it's acting the console serial CLI, and I log in via this 2-way. You can see the IP address of the firewall and net mask. There is no gateway configured, and serial number unknown because the VM1, and this is the model of the firewall. This is the software version of firewall. And I was talking, there's 2 CPU in the firewall. One is the management plane, one is the data plane. So you can see that here, the CPU resources. Right now, the management plane CPU is quite utilized, but after replacing it lower down, it's 27%, and data plane, there is no data. So it's like 1% right now CPU. Session count, how many sessions do we have in the firewall? That count is showing. There is no session right now available. So if I go and I try to log in with the putty of this firewall, with the CLI of this computer instead of this serial one, so you can see that I'm able to SSH. And I try to log in. Sir, in dashboard, I have not seen a serial number licensing. Yeah, because this is the VM firewall, with, so don't have license of this firewall. Okay. Then we won't get log. We only not get a log for threat and the traffic and URL filtering this section. Like this section only will not get a log. Rest will get every logs in the firewall, like session browser, what the traffic is going and out, any in policy monitoring, is the heat available or not, net, like we are net policy available or not on the firewalls. So everything will get, only this logs we're not going to see in the firewall, this license, the traffic logs. So probably this log will only be applicable once we're having a license of this firewall. So let's see, like already I believe working for getting the license. I'm not sure when it will be available, but it is a high priority for the license. And they are working with the Palo Alto to getting the license. But no worry, nothing will be like you will understand in each everything, because we're having a live session browser. Here we'll get each and every logs. The similar. Actually, few months back, they are giving 3 months trial version, but they have withdrawn the facilities. They have withdrawn. I still having the like trial version for the 60 to 90 days, but for that you have to have one contract with the Palo Alto.
If you don't have contract, you don't get that facility. So right now I still have valid. So I asked them to just try to take 1 VM or 2 VM license. Let's see when they're going to take. But no worry, for learning purpose, more than 95% things will easily understand in this VM environment. No need to worry about that. Even we'll see hit counts and all, everything in the policy rule and NAT rule and QS rule. So no worry for that. So this is how we can configure this firewall in very new. And after that, whatever we want to do, like we want to create LTE interface on all, we're going to do it step by step with all the things, initial configuration, system management and software. So I'll probably cover this all in upcoming session. So I believe for today it's okay for now, because we just have done how to log into the firewall, how to take CLI, GUI access, and how dashboard. I'll explain each and every tab in dashboard, what that means, system log, data log, ACC monitors and all. And probably we'll do some additional configuration management, licensing software. I'll tell you how to do all the stuffs. Account administration. So we'll do this section from next class. So is it fine, guys? You were able to understand whatever we learned today or in last classes? Sir, I should watch the data flow again. The class will be uploaded. Yeah, definitely. I recommend everyone watch this data flow and go through this PDF file again and again, because this is a very important thing. Like at least you should know these two content: fast path, slow path, and this one. This is just for the exit one, so you just have to know about the content inspection. What that means, the content inspection. If you know the content inspection, that no need to worry. That's the concept only applicable here. And then the egress, how the packet will be treated for the SSL, SSL proxy based packet and the IPsec based packet. That things you have to know. And recording will be available by tomorrow. I'm just assuming, not by today. It will take a time, as I mentioned that. And you guys can try to log in this firewall, explore different monitor type. If you're having the already access from your account, username, password of this lab access if you already have, just try to go. And let me stop this and I'll show you. So also required a big hello. हाँ बताओ आप. Hello, हाँ पूछो आप. Hello, yeah, tell me. So also required good configuration for lab access. System required a good configuration. Good configuration, not understanding what means good No, configuration. sir, good configuration means 8 GB is sufficient, or we have to extend the RAM also? 8 GB is fine if you just want to run a Palo Alto. It's fine for you. So below 8 GB, like a 4 GB? 4 GB, I don't think will be support. One firewall you can run, but I never check on the 4 GB, but it is not supportable version. The PC will be lag if you use 4 GB. Yeah. Sir, PC lag करेगा 4 GB RAM. Lag करेगा. Whatever networking is providing, like virtual labs, we can access them with the 4 GB of RAM even. But if we want to install EVNG in our personal laptops, so we need more than 8 GB. That need 8 GB. Yeah. Okay. For this. But whatever this we can access with 4 GB also. This is just like a URL. You can just need internet access. You can access. Yeah, okay. that's it. No resource. By the using of URL. Yeah. By the using of URL sufficient. You just need 4 this GB. URL and username and password. That is fine. And this is your lab guide. You can just go in new batch. If you create a new batch, I'll just move in one folder, and this is your lab. You just click in new batch. You can find this lab. Close and go here in my folder, and here's a new batch. And find this folder. Okay. सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे फिजिकल जो बॉक्स होते हैं, जैसे हमारा स्विच होता है, राउटर होता है, ये जो आपने अभी पालो अल्टो फायरवॉल में दिखाई थी, इस पे पालो वीएम लिखा था, तो इट इज अ VMware फायरवॉल और इट्स लाइक अ फिजिकल बॉक्स व्हिच वी हैव टू नहीं एक्चुअली क्या होता है कि ये सिर्फ हमारा सिमुलेशन एनवायरनमेंट में है,
फिजिकल बॉक्स नहीं है ये। एक्चुअली क्या है कि इट्स लाइक वर्चुअल एनवायरनमेंट। जैसे हमने क्या बोलते हैं, जैसे हमारा कोई हार्डवेयर होता है, दे हैविंग सम फीचर, हमें उसको बॉक्स खरीदना पड़ता, पावर देना पड़ता, बट इट्स द सेम इमेज डिप्लॉय इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो सेम टाइप ऑफ फंक्शनलिटी देता है, फंक्शनलिटी सेम है, बट ये फिजिकल बॉक्स नहीं है, वर्चुअल है, एक सॉफ्टवेयर है, इमेजेस को रन कर रहे हैं। बट जस्ट लाइक जैसे पैकेट ट्रेसर या हम जीएनएस करते हैं, जस्ट लाइक सेम। हाँ सेम, वैसे ही सेम सेम कॉन्सेप्ट है इसका भी। ओके ओके। जैसे आप पैकेट ट्रेसर के अंदर राउटर लगाते हो ना, जो वर्चुअल राउटर होता है, वैसे ही ये वर्चुअल फायरवॉल है। ओके ठीक है सर इंटरनेट में ओवा फाइल अवेलेबल है? ओवा कौन सा? ओवा फाइल, ओवा आईओएस फाइल, ओवा फाइल, ओवीए फाइल हाँ अवेलेबल है। आपको खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, वरना मैं दे दूंगा आईओएस, नो वरी फॉर दैट। उसका जो इस पे सपोर्टेड आईओएस है क्यूको फाइल, वो मैं दे दूंगा आप लोगों को, अगर किसी को चाहिए होगा, नो वरी फॉर दैट। सर आपने कोई वीडियो बनाया क्या ईवीएनजी को इंस्टॉल करते हुए? ईवीएनजी को इंस्टॉल करने के मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप It जाओगे was इंटरनेट there पे, in networking YouTube channel. इट वुड बी ग्रेट यार, प्लीज हेल्प। मैं अभी दे रहा हूँ जो So all the firewall coming with GUI interface or CLI also? See, this was the live, एक मिनट, ये अभी रिसेंटली अतुल ने बनाया था, ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें अंदर है, अभी इसको फॉलो करोगे, आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके मैं एक चीज भेजना था और नहीं भेज पाया था, ये वाला डॉक्यूमेंट और ये रही वीडियो, जिसे ईवीएनजी आप लोग खुद से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। राइट, और आईओएस इसका आईओएस मैं ओएस वर्जन मैं आप लोगों को दे दूंगा गूगल ड्राइव में, ठीक है। राइट, क्योंकि तभी कर पाएंगे सर इंस्टॉल। हाँ चलो अभी इतना तो कर लो, जो बताना आपको हो जाए तो, ठीक है। हाँ मैं ओएस को गूगल ड्राइव में दे दूंगा, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे एक्चुअली। तो आपने कहा कि पालो अल्टो इज अ स्टेटफुल फायरवॉल, राइट? तो इज इट एक्ट आल्सो अ स्टेटलेस फायरवॉल? बिकॉज इसमें क्या देख रहे थे हम, as per the flow chart, if you open the flow chart, they're also required to go in the flow path, and can you please mute if someone is not yeah good. Yeah guys, okay, yeah. So इसमें दो चीज थी, that it's also doing the stateless and also doing the stateful act, right? So why we say that it's a stateful firewall if it's also act as like a stateless as well? So see, in first stage I mentioned that जब फर्स्ट पैकेट किसी भी स्टेटफुल फायरवॉल के पास भी अगर हिट करेगा, तो उसको पता थोड़ी होगा कि ये पैकेट क्या चाहता है, राइट? इफ पैकेट इज कमिंग टू मी फर्स्ट टाइम, तो उसको नहीं पता होगा कि भाई इस पैकेट से मुझे क्या करना है, दिस पैकेट इज कमिंग टू फर्स्ट टाइम। So it is not like a stateless, it is going to create a state for that firewall, that particular packet. So इसलिए हो जाता है स्लो पाथ में जाता है, उसको लुकअप करता है कि अच्छा तुम्हारे लिए क्या राउटिंग है, तुम्हारे लिए क्या नेट है, तुम्हारे लिए क्या पॉलिसी है। देन क्या करता है, वो एक अपना स्टेट बनाता है, एक सेशन बनाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम फायरवॉल डोंट नो लाइक अबाउट दैट पैकेट, बिकॉज पैकेट पहले बार ही उसको आ रहा है, तो पहली बार आ रहा है तो उसको इंट्रो देना पड़ेगा ना अपने, तभी तो कुछ आपके बारे में डेटाबेस में रखेगा। इवन गूगल इटसेल्फ, सपोज करो कि आपको कोई ऐसी अननोन लोकेशन है, ठीक है, और आप उसको सर्च कर रहे हो वहां पे जाने के लिए, अब गूगल के डेटाबेस में वो है ही नहीं, तो कैसे आपको वहां भेजेगा? मैट भी कहीं गलत जगह पहुंचा देगा आपको, राइट? तो आपको गूगल के डेटाबेस में जाके आपको उसको बताना तो पड़ेगा कि यस फॉर दिस लोकेशन इज आइडेंटिफाई एंड दिस इज 100% ट्रू एंड दिस इज लोकेटेड इन दिस प्लेस। तो आप उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब ऐड करोगे उसका, या फिर कुछ और भी तरीके होते हैं गूगल मैप में उसको ऐड करने का, लोकेशन अब जाके वहाँ पे आप उसको लोकेशन सर्विस में ऐड कर देते हो, तो अपने आप आइडेंटिफाई होता है, डेटाबेस में उसको चला जाता है, तब गूगल आपको राइट डायरेक्शन दिखाता है, उसके बाद पूरी स्टेट होती है उस लोकेशन में जाने के लिए। सिमिलरली फायरवॉल्स जो स्टेटफुल भी होते हैं, तो उनको भी फर्स्ट टाइम तो जानना पड़ेगा ना पैकेट के बिहेवियर के बारे में, जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक हाउ दे विल मेक देयर स्टेट्स। मेक सेंस? So we can call Palo Alto as a stateless and stateful. That is not 100% correct. You can think about this, but Palo Alto is a stateful firewall, not stateless firewall. Just in first packet, it is behaving just to find out the session.
But if you go the definition in the practical and documentation, it always talk about the stateful firewall, not the stateless. सर हेलो हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना फायरवॉल सिक्योरिटी पॉलिसी आप उस पर बोले थे कि 10 डॉट जो एग्जांपल दे रहे थे 10.10.20.20 और 30 डेस्टिनेशन चेंज होने के बाद तो अब मेरा तो पॉलिसी ऑलरेडी प्री डिफाइंड है तो डेस्टिनेशन चेंज कैसे होगा नेट लुकअप के बाद डेस्टिनेशन नेट अगर होगा तो अगर सपोज करो डेस्टिनेशन नेट होगा आपने सपोज करो कि आपने x.x.x डेस्टिनेशन के लिए आपने राउटिंग लुकअप किया राइट बट आपने उसमें नेट में दिखा रखा कि अगर आप कोई पैकेट x.x के लिए आता है तो उसको y.y पे कर दो तो आपका डेस्टिनेशन चेंज हो गया ना नेट तो चेंज कर देगा सोर्स डेस्टिनेशन पे उसके बाद तो कैपेबिलिटी होता है तो वो नेट जब डेस्टिनेशन चेंज कर देगा तो फिर से राउटिंग चेक करना पड़ेगा ना आपका नया डेस्टिनेशन उसका नया पाथ बनेगा फिर तो अच्छा ठीक है तो इस वजह से डेस्टिनेशन नेट की जरूरत होती है मतलब दोबारा जरूरत होती है अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट कल दशहरा है सो टुमारो विल बी हॉलीडे फॉर एवरीवन ठीक है सो हम मंडे से क्लास करेंगे मैं भूल गया तो बताना आप लोग के लिए ठीक है सो इट्स ऑफिशियल हॉलीडे या सो यू गाइस कैन एंजॉय द हॉलीडे ऑफ द फेस्टिवल ओके सो फिर मंडे को हम लोग मिलेंगे तब तक आप लोग 3 दिन पढ़ के आना और प्लीज अपलोड दिस पीडीएफ इन पोर्टल मैंने बोला है यार मैंने बोला है और आप लोग का लर्निंग पोर्टल पे अपलोड हो गया होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है मैं देख नहीं सकता स्टिल नॉट सर वो वाला बुक्स अपलोड नहीं हुआ है जो आप बोले थे कि एश्योर किए थे अच्छा ये वाला बुक अब जब वो यस्टरडे जो दिखाया था ना हाँ यही वाला बुक है यही पेन यही वाला ठीक है कोई बात नहीं आप टेंशन न लो मैं दोबारा बोलता हूँ वो कल बोलता हूँ मैं अभी मैसेज डाल देता हूँ कि अपलोड में को पूछ डाल देता हूँ मैसेज अपलोड हुआ कि नहीं पूछ रहे हैं आप लोग ठीक है और So I have a question. Tell me. So all the firewalls coming with GUI interface or CLI also? You see for the Palo Alto, it's a CLI and GUI both. Other firewall also support a CLI and GUI both. Both of. Yeah. Okay. So can we do the practical if we forgot the login password, admin password? Practical for what login password? Forget that. In future classes, if any scenario that we will, if in any case we will get the forgot admin password, how will we recover it? Like in switching and routing, we can cover it through the commands. In Palo Alto, is there? Your voice is somehow breaking. I mean, like he's asking password recovery. A Palo Alto password recovery. Hello? He's asking for that. Yes, exactly. We have to do the recovery process for the entire firewall. We have to reboot. We don't have provision like in Cisco having a password recovery, right? There is a recovery process also in the Palo Alto firewall, but we have to go from the not from GUI. It's possible only the serial interface and console. We have to go the recovery and all. So that's quite complex process for the Palo Alto. It's not too easy like the even Cisco. But there is a things, very good things for the backup and all, incremental update and all that you can quickly, even your firewall is somehow corrupted and you just having a backup somewhere, you can just quickly upload that backup and your firewall fully functional within hour. In less than the hour, once you just power down on your firewall, take a GUI, just need to upload the previous configuration, whatever taken a backup, that will be, start working like other boxes. So that will you teach us future classes? So see, in this VM, we don't have provision to make them corrupted, but we will understand. If you really want to understand how the process is going to recovery process is going to happen, I can tell you in the help of the documentation. I do have a documentation for that. No worry for that. Okay. So there is certain steps you have to follow. By the help of that documentation, you can able to understand how can do this recovery. So if all are fine, we can connect on Monday. Okay, guys, good.
Monday. Okay. Okay, Yeah. sir. Yeah, tomorrow will be holiday and Saturday, Sunday there will be no class. Okay. So Okay. tomorrow is Friday, so we'll connect on Monday. Okay, and we'll continue our classes from Monday to Friday again. Okay, sir. See you. Okay, bye bye. Take care. Have a Take care, great sir. night. Good night. Okay. Good night.